डॉक्टर माने हम पाखरे अछंती एवं ए बाबद रे मध्य आलोचना हेबो डिबेट सेशन रही दुईटी डिबेट सेशन जो थे अभिज्ञ डाक्तर माने रहिबे आपण माने चाहिए आपण मन में जहाँ प्रश्न अच्छी स्वास्थ्य को नहीं आपण तांको सहित आलोचना मध्य करि परिबे। समस्त को पुणी थे अनुरोध समय भितर आम आमर वेलकम सेशन स्टार्ट करबा। अभिज्ञ डाक्तर माने आज आम गहन अच्छा तेबे वर्तमान आमर वेलकम सेशन स्टार्ट करने को आम जाऊे। वर्तमान अनुरोध करी आमर आज अतिथि माने जो माने अच्छी तांको डैश ऊपर को आमंत्रण करबा। प्रथमे वेलकम करी प्लीज वेलकम डैश द चीफ गेस्ट डॉक्टर भारती प्रवीण पावर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम को रिक्वेस्ट करूंगी जे वो आएंगे और मंच पे अपना जगह ले लेंगे। मैडम एक सुस्थ भारत गठन रे तांकर मध्य अनेक भूमिका रही। तेबे नेक्स्ट गेस्ट आम पाखे रही जे से होचंती प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRS रो महानिर्देशक प्रोफेसर आचार्य दायित्व ग्रहण करने पूर्व जामनगर ITR रे से मध्य प्रोफेसर भावे काम करछंती। तेबे एवं आम सहित वर्तमान आउ जण अतिथि मध्य अछंती ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार बिशोई एमिनेंट सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ सिटी VS एम्स न्यू दिल्ली। एवं तांको सहित अनुरोध करी द एडिटर ऑफ ऑर्गस न्यूज मिस्टर संजय जेना। मिस्टर जेना को पई जदि देखा जाए जे तांकर 25 वर्षर अभिज्ञता रही गणमाध्यम रे एवं से पूरा रिमोट एरिया को जाइछंती जो साधारण लोक माने रहिछंती सेमानकर जहाँ असुविधा रही से असुविधा को ऊपर लेवल भीतर गोटे बड़ परिवर्तन आनिबा सेति पई मध्य से प्रचेष्टा जारी रखिछंती। एबे आपण माने देखुथिबे ऑर्गस माध्यम रे मध्य रूरल एरिया रो लोक माने जो असुविधा रहिछंती ताको नै कि मध्य आमे सबले खबर प्रसारण करछु। तबे वर्तमान समस्त को गेस्ट मान को अनुरोध करी एवं मिस्टर जेना को मध्य अनुरोध करी प्रदीप प्रज्वलन पाई। एबे अनुरोध करी ऑर्गस CEO श्री प्रकाश चंद्र साहू को प्रदीप प्रज्वलन पाई। Now request to play the Vande Utkal Janani Odia patriotic song. Vande Utkal Janani
वर्तमान अनुरोध करी द एडिटर ऑफ आर्गस न्यूज मिस्टर जेना को जे वेलकम एड्रेस करबा पे। अर्गस न्यूज तरफ आयोजित ओडिशा हेल्थ कॉन्क्लेव कन्वेंशन को गोटे दिनर ए कार्यक्रम को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पहले हमारा साथ यहाँ उपस्थित डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मैडम भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्र मंत्री है। मैं उनको हमारा ये कार्यक्रम के दिल से स्वागत करता हूँ। आम सांगरे डॉक्टर अक्षय विशोई अछंती जड़े सफल ओडिया दिल्ली एम्स रो जड़े सफल डाक्तर भावरे निजर परिचय को निजर परिचय माध्यम रे ओडिया भावरे आमको गर्वित करिसंती। आम सहित प्रोफेसर रविनारायण आचार्य अछंती आयुष मंत्रालय रो जड़े बड़ अधिकारी डाक्तर भावरे तांकर ख्याति रही। मु तांको ये कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। तांको सहित सभागृह रे उपस्थित विशिष्ट डाक्तरगण गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त को स्वागत करुच्ची। आम सहित मृदुला भाउज अछंती जे सबु बेले आम सहित सहयोग और शुभेच्छा दे आसीचंती। आमर सीईओ प्रकाश भाई अछंती। समस्त को मु ये कार्यक्रम रे स्वागत करुच्ची। ये कार्यक्रम रे आउ दुई जन अतिथि को एठी आमे अभिनंदन करिवु तांको मध्य मु स्वागत करुच्ची। डॉक्टर शंकर रामचंदानी एवं डॉक्टर ओमकार होता तांको स्वागत करला बेले आम तांको विषय रे विशेष परिचय नबा। आमर ये कार्यक्रम आयोजन पछरे गोटिए उद्देश्य देश रे गणतंत्र अच्छी लोकंक पाखरे विकास पहुंचेबा पाई। ये विकास प्रक्रिया रे बहुत स्टेक होल्डर अछंती। ये स्टेक होल्डर मध्य रे गणमाध्यम गोटे समन्वयर भूमिका अच्छी। से सरकार होंतु साधारण लोक होंतु प्रशासन हो स्वास्थ्य सेवा को परिचालना करुथिबा लोक माने होंतु समस्तंक मध्य रे एक समन्वय स्थापनर एक भूमिका गणमाध्यम पाखरे अच्छी। जेतेबेले प्रमुख काम गणतंत्र विकास पहुंचेबा और विकास प्रक्रिया रे सबुठु बड़ काम होउची लोकंक पाखरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचेबा। एक सबुठु गुरुत्वपूर्ण लोकंक पाखरे पहुंचेबा कम पैसा रे पहुंचेबा आउ उत्तम गुणवत्ता सहित पहुंचेबा। आमर ओडिशा हेल्थ कनेक्ट ये एक दिवसीय कार्यक्रम जोठी मैडम भारती प्रवीण पंडा भारत प्रवीण पवार मैडम उपस्थित अछंती। तांकर मार्गदर्शन रे गोटिए दिनर कार्यक्रम चलिबो आ गणमाध्यम रो दायित्व भावरे आमे लोकंक सहित जोड़ी हबा पाई जो आमर आग्रह अच्छी जो प्रचेष्टा अच्छी से प्रक्रियार एक अंग भावरे आमे ओडिशा हेल्थ कनेक्ट कार्यक्रम आयोजन करुचु। स्वास्थ्य साधारण लोकंक सहित केमिति जोड़ी हेई पारिबो ओडिशार उपांत अंचलरू सहरांचल पर्यंत सबु लोकंक पाखेरे कम पैसा रे आउ उत्तम मानर सेवा पहुंचेबा बाटरे कौन कौन समस्या अच्छी से समस्या समाधान रे आमे गुंडुची मुसार भूमिका नहीं पारिबु कि ये प्रसंग को आमे सेइथि पई गुरुत्वर सहित नैचु। ए एक दिवसीय कार्यक्रम भारतर स्वास्थ्य राष्ट्र मंत्री उपस्थिति रे फलप्रद हबो एई आशा एवं इच्छा सह मु समस्त को स्वागत करुच्ची। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीजुक्त जेना। ते वर्तमान अनुरोध करबी जे ऑनरेबल गेस्ट अछंती प्रोफेसर अक्षय कुमार विशोई को मंच उपरे आसबे एवं तांकर किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहबे। जय जगन्नाथ। The Lords of the Sea
This is how Kalingans were addressed by Kalidas. And those days, our parents used to wish that Paschema Sarada Satam, Jivema Sarada Satam. We may see 100 atoms and we may leave 100 atoms. Good morning, everybody. Ma'am, and especially to Mridula ma'am, because she prompted me to come here. This is my hometown, in fact. I will prefer rather to be a host rather than being a chief guest or guest of honor, because this is my home. We are today talking about health. We are not talking about illness. We are not talking about disease. We are not talking about hospitals. We are talking purely about health. This is what the quality health care. Because unless we know what health means and what health is, we will be misdirected as we have been misdirected for over 7 decades. When I read the parliamentary debates when the bill for All India Institute of Medical Sciences were being piloted and discussed, that day, if anybody gets a chance to read it, that day we lost the health of the nation. Because the entire system of indigenous medicine was put to the back burner and the thrust was given to the modern medicine. As we all know, in our Varna system, that Brahmacharya used to be up to 25 years. Grahastha used to be up to 50 years. Banaprastha used to be up to 75 years. And Jativrata 75 plus. So we are actually having a life expectancy of 100 years. And we dropped down to virtually 25.4 years in 1600 AD. What happened? That time there was not much of technology happening, but we are living 100 years. What we actually lost? We lost our language. We lost our culture. We lost our indigenous system of medicines. If anybody gets a chance to read East India Company annual report being submitted to the British Parliament, they have written that the indigenous system of medicine is so advanced that we fail to understand. Surgical skill is so high that we are not able to match up. And education system is so widely connected. Toll system, we used to have toll system in the villages. They decided that needs to be destroyed fast. They called us native doctors, brown doctors. We are reduced to compounders. We used to go with the British white doctors as compounders carrying their bags. We are uprooted completely culturally because we are talking about health. Health is a multifaceted attribute of our life. It is a multidimensional, dynamic state of being. It is not the presence or absence of the disease. It is a state. And it changes. And then we have to find a harmony. Harmony between our body, mind, and society. And one component also, intelligently they lost it, spirit, spiritualism. If you see WHO definition of health, they say it is a state of complete physical, mental, social well-being. Spirituality is not there. What is going to define well-being? What is the benchmark? Because unless we have a concrete, tangible definition, then we cannot initiate a debate.
And who is deciding what is well-being today? It is the industry. What I should eat, what treatment I should receive, how long I will remain alive, what I am supposed to do. I am not deciding anything, in fact. So does it mean that we have actually surrendered our health to some external agency which is calling the shots? Yes. Candidly and honestly, I will admit, after 30 years of my career in highly super specialized branch, we did fast heart transplant, we did stem cell, we did robotics, we did LVAD, we did everything. What we did not do in all India Institute of Medical Science is health. We practiced disease, we treated disease, we took care of sick people and got lost in the end of life care. That is not health. There is a term used, is connect. The first connection for health between any individual life is between that life and the mother in the uterus. That is umbilical cord. Then the cultural connection starts the family. What activity, what prayer, what values, what culture, what study, everything was in the family. Today you know that our kitchens are gone. There is no kitchen. It is McDonald's which has decided what to eat. McDonald's has damaged the world much more than even nuclear bombs. So, is it right to search for the health in hospitals? Absolutely not. The cost, the uneven quality, and limited access is making us more angry, frustrating, and often depressive also. Recently, ICMR did a study, it has been published, about tribal people. Of the mortality, out of 100 people dying, is because of the non-communicable disease like cancer, disease, chronic respiratory disease and diabetes. All are lifestyle related. Another study, $5 bacteria, they are killing almost 13 people out of the 100 people in the world. So 66 plus 13, 69, 79. 79% of the deaths which are happening around us is simply related to lifestyle. What was the ancient culture where our lifestyle was being decided? It was decided in family. It was not decided by industry. Everybody talks about state of the art, technology. But for what? They are for diseases, they are not for health. I will give you 3 examples which can determine our health. We know that Japanese people, they have very less coronary artery disease. But when they migrated to west coast of USA, some of them, they adopted an American lifestyle. High fat, high calorie diet, smoking and drinking, including the value system. So they ended up having the same high incidence of coronary artery disease as the Americans. There was another group, those who adopted the American lifestyle but maintained their family culture. Their coronary artery disease is much, much lower. And those who maintain the lifestyle as well as the cultural value system and family system, they had the same lowest coronary artery disease incidence as the Japanese people. So even the culture, even when you are exposed to high fat, high calorie diet, it can influence.
Because remember, everything is being controlled from the here. I will give you another example. This case happened in Lahore jail in 1937. During British time, of course. There was a convict, 28-year-old young fit person to be convicted, to be killed. They wanted to know what is the best way to kill the person. There was no ethical committee, clearances and all those things. They declared. One Bengali doctor said that I will kill the person without giving him pain. And you can understand, correlate that to the today's world. Death is an extreme and violent form of snatching away health. Everybody knows. And that is we all are struggling to prevent or to postpone. But we did not know that it is being controlled from head. What happened? The doctor went and explained to the convict that I will blindfold you, I will put you on a mat, and I will scratch your arms and legs. I will make small cuts and blood will dribble down. Slowly, slowly you will cool down and you will die. He blindfolded, put the man on the mat, hands and legs tied. He put 4 strands at the ends, 2 leg and 2 arms. Small holes on the bottom of the pot. And he put tray filled with water below. He scratched the hand with his finger, no cut, nothing. But imagination started in the mind that he is going to die. He unplugged the pots and water started dribbling down. Initially it was falling faster, it was getting fast, so he was thinking that blood is dribbling down. Gradually, pot was getting emptied and dribbling stopped. And doctor said, you check that person is dead. And he was dead. He was dead. It is not the disease which is actually killing us. It is our reaction to the disease which is killing us. I have many patients, they have coronary artery disease, does not happen over time. It happens over a long period of time. The moment the doctor says that you are having coronary artery disease, his health is gone. He is finished. So it is the information how you process. And that is pegged to your culture. I will give you a third example. With this I will finish. In the last OPD, I had a 10-year-old boy, 4 feet 7 inches tall. He had an arterial switch operation when he was 2.8 kilogram and 1.5 months old. He was now, can you imagine what will be the weight? 71 kilogram. I checked that the child was having blood pressure, high blood pressure. I said, what do you eat? He said, before going to school, I eat from Rajasthan. He said, I used to eat chapati. Then in the lunch, 11 o'clock, again chapati. When you come back school, again chapati, sabji. Night, again chapati and sabji. I said, you eat only these things? He said, no, on Saturday, Sunday, I order pizza, burger, sauce, breads. No, it is very easy to give a call on Swiggy and deliver. No. Mother is eating another room, father is eating another room, children are eating another room. They don't know what they are eating, how much they are eating, watching television, watching mobile. Then you become obese, then you become diabetic, then you become hypertension, then you become coronary disease. Then you go to a doctor. What the doctor will do? Doctor will do a business. No doubt about it. Because now market value has replaced moral value. Everybody wants money. But is it going to last? No. That is our leaders, while framing the constitution, they never gave health a fundamental right status because individual has to be accountable and responsible. You cannot leave it to the state. State will facilitate you. State will take care of the vulnerable children, mothers,
but not your whims and fancies. In Japan, everybody has to pay. Even the poorest man has to pay 10% of the bill. It is never free. By making healthcare actually free, we have given a license. Today morning I saw in the airport there is a lounge where people can smoke. You allow them to smoke. Then you have cancer. Why? But as Sanjay ji said that we have to take development to the villages. No. We have to bring development from the villages to the city. Because city is a dumping yard. It's a garbage. Everything comes from the village. So I am against downgrading the villages as if they are destitute, suffering, they need everything. You encourage them, you facilitate them. But how to do it? It can be simply done without much cost. Go for a family approach for healthcare. Integrate the mother with the primary school and integrate the mother to primary healthcare center. Let her be a stakeholder which she had been for the centuries of years. She has tremendous wisdom. I will give one example. One Apple CEO was asked, who are the best CEOs in the world? You'll be surprised to know. He said Indian women. They are less educated with a gungat, hostile customers, husband, son, mother-in-law, father-in-law, people, neighbors. They cannot take up the gungat, they cannot talk, they cannot see their eyes. They will not ask questions. Whenever anybody comes to them, they know what the fellow wants, why he has come. Where from it comes? Because they have been running the largest empire for the longest time, that is the family. It is intuitive knowledge. They have the tremendous intuitive knowledge. Integrate the mothers of the families to the primary education and to the primary health care center. They will deliver. They will deliver. And everyone has to be accountable. So I am not going into developing modules for delivery, organizational innovation, or technology, its appropriation and assimilations, because these are dedicated for mostly for taking care of end-of-life cares, hospitals. So hospital is a sick place. When we talk about health, let's not talk about hospitals. Talk about families. Thank you. Thank you, sir. जमती पूर्व मिस्टर जेना कहते जे आमर आज ये कार्यक्रम आम एक महत्व उद्देश्य नहीं करूँ एवं खास करी जो दुई जन व्यक्तित्व को आम आज ये सम्मानित करूँ कहुए जमती डॉक्टर होती द्वितीय भगवान सेमती दुई जन डॉक्टर अच्छा आम निकटरे फेलिसिएट किंतु आम गहन में बर्तमान अच्छा सोआ यूनिवर्सिटीर भाइस चांसलर आपण जानिथिबे जे पृथ्वीर सबुठ बड़ न्यूरो सर्जन अशोक महापात्र तांको मध्य स्वागत जणाइबो कार्यक्रम रे तबे जेमती कहउतिली दुई जण व्यक्तित्व अछंती आम निकटरे दुई जण डॉक्टर आपण समस्त जानिथिबे जेतेबेले आमे स्वास्थ्य कथा चिंता करू सेतेबेले मनरे प्रथमे तो आसे जे टंका आम पाखरे आमे जदि हॉस्पिटल जाउछे आम पाखरे पर्याप्त परिमाण रे टंका अछि ना नाही कारण आमे जानिने सेटारे केते खर्च हबो किंतु समस्ते जानिथिबे जे टंकिकिया डॉक्टर हिसाब रे से वर्तमान समस्त मुहर प्रशंसा साउंटुछंती गरीबों को डाक्टर तांको कहा जाउची डॉक्टर शंकर रामचंदानी आम निकट अच्छी सार को आमंत्रण करूँ मंच उपर को
वर्तमान सार को फेलिसिटेड करा जिवो एवं अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री जी को जो उनको फेलिसिटेट करेंगे। Dr. Shankar Ramchandani is an underprivileged people's masiha. He treats his patients for just merely 1 rupee. He provides medicine at 1 rupee too to the needy ones. Dr. Ramchandani's empathy, obviously begun from the hardship that his family had gone through, is indeed praiseworthy. Fled Pakistan after partition, his family had fragmented and stayed in different parts of the country. Ramchandani, a young and talented physician, has taken the vow to stand on his own and to serve people. Seeing his family's plight and very close quarters, Dr. Ramchandani has decided to serve people by providing free treatment and medicines best to his ability. थैंक यू सर। सेमती आउ जड़े व्यक्तित्व अच्छा आप समस्ते जानते जे दमन फिल्म वर्तमान केते लोकप्रियता हासिल करी खाली जे ओडिशा रे ता नुहे वर्तमान जातीय स्तर में दमन फिल्म को लेकिन चर्चा आम पाखे आज अच्छा उपस्थित दमन फिल्म रो रियल हीरो ऑडियो वीडियो प्लीज सार को स्वागत करी जो मंच ऊपर को आसवे। Dr. Omkar Hota, Dr. Daman Omkar film Hota, the real hero of the blockbuster Odia movie, Daman. The charisma of character Dr. Omkar Hota has displayed made the film for a Hindi dub, posted in an inaccessible cut-off area of Maoist-infested Malkangiri district. जवान पिला तमे नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करो अरे नुआ लोक संग मिस तो ओडिशा बाहर को पठौछन्ते व्यस्त हो जाउछ जाओ। Dr. Hota has not only marked his presence through his profession, but also has come to the national limelight for his noble service. Dr. Hota, with the support of another person, carried a bleeding pregnant woman in a cot to the district headquarters hospital in Malkangiri. Through his dynamic approach, Dr. Hota convinced the tribal people to rely on modern medical sciences instead of black magic and also influenced Maoists to trust on his pro-poor approach. We are delighted to tell Dr. Hota was one of the guests during the launching of Argus as a digital media platform in 2018. आपण माने एठी खाली ड्यूटी करिया बेसे नांती एठी लोकमानकर जीवन बचाउछंती आ लोकमान को सुरक्षित सुएबा पे हेले तांको निदरु उठेबा को पड़िबो। Dr. Omkar Hota, the real hero of the blockbuster Odia movie, Daman. The charisma of character Dr. Omkar Hota has displayed made the film for a Hindi dub, posted in an cut-off area of Maoist-infested Malkangiri district. जवान पिला तमे नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करो अरे नुआ लोक संग मिस तो ओडिशा बाहर को पठौछन्ते व्यस्त हो जाउछ जाओ। Dr. Hota has not only marked his presence through his profession, but also has come to the national limelight for his noble service. Dr. Hota, with the support of another person, carried a bleeding pregnant woman in a cot to the district headquarters hospital in Malkangiri. Through his dynamic approach, Thank you, Dr. Hota.
तो वर्तमान अनुरोध करी मंच को आसवाई एक्ट्रेस नैना दास जहाँ आपण दीर्घ समय एक्टिंग हो से समस्त को पूरा मुग्ध करी रखती तेरे लिजेंड एक्ट्रेस आम गणराज्य अच्छा फेलिसिएशन करने मंच उपर को आमंत्रण करी मैडम को। मंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको फेलिसिएट करेंगे। मैडम फेलिसिएट करेंगे। थैंक यू मैम। एबे अनुरोध करी आम पाखे अच्छा सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू मंच को आमंत्रण करूँ फेलिसिएट करा तबे मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगी उनको फेलिसिएट करेंगे। थैंक यू मिस्टर साहू। Now request to Chief Guest Dr. Bharti Praveen Power to speak something on dais. क्षमा चाहेंगे। अभी वर्तमान अनुरोध करी गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार बिशोई प्रोफेसर एंड क्षमा करेंगे प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य डायरेक्टर जनरल CCRS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जय धन्वंतरी। Today's chief guest, Honorable Minister of State, Dr. Bharati Praveen Pawar ji, Dr. Akshay Kumar Bishoy ji, Professor AIMS, New Delhi, and all the dignitaries on the dais and of the dais. At the outset, I thank AYUSH TV for providing this opportunity and arranging a health connect where a person like me, who is representing the integrative medicines, is being invited to present the views of Government of India in particular, and what the term integrative medicines and what the present leadership under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is taking steps to highlight
the integrative medicines, particularly the traditional medicines in our country. And with that, I permitted from the chair, from the president, I can have some slides, please. Before starting the presentations, let's start what our guest of honor Akshay Vishwaji highlighted regarding the role of our traditional medicines in Ayurveda, in India in particular. Dear friends, whenever young persons comes to us and being a senior, we bless them with the word Ayushman Bhava. That the present vision of our Honorable Prime Minister, the Ayushman Bharat, that is the Ayushman Bhava, that Ayu itself says not only the lifespan, it says the 5 sense organs, the mind and soul, all to be in good conditions. When a senior bless us, he bless us the word Ayushman Bhava. Ayu terms in Ayurveda, not only the lifespan, it says Ayu is a term which covers the 5 sense organs, the mind and soul, to be good for the years to come, to a younger point. In that way, our presentation is ready. How can I see that? No, but I can't see it from here only. So, the present with this vision, our Honorable Prime Minister during this year Global AYUSH Investment and Innovation Summit has said, India is celebrating the festival of 75 years of independence, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am sure that our Amrit Kal of next 25 years will be the golden period of traditional medicines in the every nook and corner of the world. Today, in a way, a new era of traditional medicines has started all over the world. So this is the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi. With this vision, the traditional medicines system is working and has a plan for the next 25 years. As I told, next slide please, as I told that the AYUSH network in India in particular is having registered practitioners of 7,99,000 of AYUSH practitioners in the country, and there are near about 702 teaching institutions, and post-graduation institution in particular 203, an annual intake of 46,000, and PG courses of 5,536 postgraduates are coming over every year, and there are near about 4,035 hospitals, AYUSH hospitals, where Ayurveda is having leading 3,205, and dispensaries are 27,951, where the Ayurveda is 325 dispensaries, and particularly there is a huge growth in the drug manufacturing sector, and there are near about 8,954 drug manufacturing companies are there, and AYUSH sector in that in particular is growing in a very widespread way. But at the same time, we have to maintain the quality of the drugs and the efficacy of the different. For that purpose also, Government of India is taking a large number of initiatives. Being a research head of the research organization of Central Council of Research and Ayurvedic Sciences, we have 30 research institutes across the country, and also there are 9 research All India National Institutes. In the 12 is national institutes, and 3 are of Ayurveda. So in this way, the Government of India is working on national, different AYUSH sectors, and particularly I am coming over the purpose. One of the major purpose of this conclave is integrative, how to reach Ayurveda, because there is a common saying what Professor Vishwaji told, that common saying among us since last 75 years, this Ayurveda, the traditional system medicines are not scientific. The bioscience, the recent bioscience which is commonly, which has a great role in prevention and management of many of the communicable disease conditions after post-independence era, but
Now, after this 75 years, a huge populations has come up with communicable non-communicable diseases. So that is the thing that is the so for this purpose, Government of India is taking a lot of steps and particularly highlighting medical tourism. And AYUSH, but Visha has a special category has been created, and Government of India is taking that step. And I am happy to being a Odisha. I know the potentials of Odisha in terms of medical tourism. We have many places in our state which can be converted to medical tourism spots, and particularly the Gandamardhan hill ranges and the south in our south part. There are also so many places are there which can, particularly the Puri, you can see how medical tourism developed in Kerala, but in Odisha that sector is very slowly growing. So that is a huge scope for growth of medical tourism in Odisha, particularly highlighting the traditional medicine system in AYUSH sector. Next, please. So here, the integrative approach, to have an integrative approach, Government of India, particularly the AYUSH Ministry, has taken a large step, and we have many projects in integration with AIIMS New Delhi. There are 7 research projects are continuing at New Delhi, and we have one of our traditional system of drug from Odisha, is being also tried in wound healing and that care also. So there are huge scope of research from AYUSH sector, and particularly I am here to highlight, because time is short, I am here to highlight the different methods of integrations. Now, we have come up with an idea of NIMHANS that is being practiced in the NIMHANS of Bengaluru. That is our Center of Excellence for Integrative Medicines, and particularly in the mental disorders. There, generally, integrations is being considered as a cafeteria methods till now. But there, we have selected a different method, different way of approach of the avoiding this cafeteria approach of patients. When in cafeteria approach, when a patient comes to the OPD for healthcare system, opting or bioscience or alternative therapy, it is up to the patient. It was up to the patient previously. But now we have taken a new scheme that where in a OPD there will be a bioscience expert. We have tried the 3 approaches there. There will be a bioscience, there is a bioscience expert, one Ayurveda expert, and one yoga expert. So particularly in psychosomatic disease, psychological disease conditions, considering NIMHANS, we have taken up that project, and that project is going successfully. There a patient comes to the OPD. The doctors will decide which system, both allopath doctor is there, Ayurveda doctor is there, and yoga expert is there. There the doctor decides what to take the treatment of the patient, because our ultimate aim of a patient, any healthcare professional is giving. Depression comes, then the Ayurveda, the modern specialist and Ayurveda specialist, yes, is a mild depression, then start with yoga only. Then if yoga after 15 days or 10 days, but considering the systems, or then they go for antidepressant drug, or if not successfully, if successfully, then the yoga practice is going on, and patient avoids taking the modern system of medicines or Ayurveda system of medicines. If that does not go successfully within the span of 7 days or 15 days, then they goes to the Ayurvedic approach. We have a Shodhana approach, we have mild antidepressant drugs, then we manage with them. If that is not successful also, then that goes with synthetic drugs, which is well proved there. Then, but without continuing that also, after 2 months, 3 months, when the patient comes to normal, again that Ayurveda approach or yoga approach is going on there. So in this way, there are other disease conditions which can be adopted at different school of the Ayurveda, different schools of medicines, and not only the antidepressant, madam, but antipsychotropic drugs also there. We are trying. We know that today's practiced drug have many adverse effects. When the antipsychotropic drugs are being administered, patients are suffering from obesity, patients are suffering from amenorrhea, other side effects are there. There immediately we are not, with the advice of the synthetic drugs and with the advice of Ayurvedic drugs,
we reduce at the same time we apply Ayurveda simple treatment of Triphala or simple some birechana therapy. We found that amenorrhea is cured, obesity is reduced. The possible side effects are being managed with continuous management of 3. Then yoga practices, particularly PCOD, another complaint is there. So in this type, the integrations, we have started a new approach in Nimhans, Bengaluru, and we are in this way we are working. AYUSH system is working, and particularly as Dr. Bisnoy told regarding the non-communicable disease conditions. Sir, for your kind information, we have already carried out a large sample study with NPCDS programs where there are nearly 11 lakhs sample size were there, where we have studied with cancer, diabetes, cardiovascular disease conditions and stroke. Along with the synthetic modern line of treatment, we provide Ayurveda treatment in 3 district blocks of Gujarat, Rajasthan and Bihar, and we got good results, and that has been published also, and Government of India is going to take steps for that approach, for the consideration of that. Next slide please. Then another is we are somewhat strong in known traditional medicines, child and maternity health care also. There also we are approaching with Gadchiroli block of Maharashtra. We have approached a large number of samples there. We have studied with WHO that aspect also. Next please. This Gadchiroli project is a good project there, which a huge number of totally Gadchiroli block of Maharashtra was undertaken on this project, and we found successfully 10 drugs of Ayurveda was trial for prenatal and postnatal care, and there we found very successful methods with in implementation that part also. So in this way, we are the Government of India is progressing with integrative way of approach of a different time, and here we have Ashokji is here also. We have already started a program with ILBS when he was at Delhi, and we are working with not only integrative approach for technology aspect also. Ministry is taking keen interest for integrations with IITs. We are working with IITs for development of instrument and equipments also. We are working with different IISc Bengaluru for diabetes and other disease conditions. So in this way, and particularly next slide please, in COVID-19 case, in COVID-19 also we have successfully shown our strength integrative way, and at different institutions of national repute, particularly AIMS, PGI Chandigarh and DMS Lucknow, IIT New Delhi. There also we have large number of studies were carried out in not only in the generally there is a saying that only communicable diseases, non-communicable diseases or Ayurveda is not emergency managed. We can't manage emergency, but many of our professionals have shown their strength during emergency, even in the ICU also by managing, giving Ayurvedic drugs. So with this, I am due to, and also particularly I am here to say words that Ministry of AYUSH under the leadership of our Honorable Prime Minister, we are here to have collaborative research with Institute of Repute at national level or at international level also. We have at international level, we have MOU with different organizations for research purpose, even if we are working with WHO for integrative approach of traditional medicines. And there are particularly National AYUSH Mission, under National Health Mission, we are covering 487 district hospitals and 2,825 community health centers, 7,132 primary health centers in under AYUSH Mission, and particularly National AYUSH Mission is also where Government of India is giving large number of initiatives, and to establish integrated AYUSH hospitals. There are 50 AYUSH integrated hospitals where is going to be established across the country, and in Odisha in particular we are also, it has been sanctioned, and it is on the way progressive way integrative plan. With this approach, the last slide please.
with this, that is the present government is proactive regarding the management of integrations of AYUSH along with modern system of medicines and showcase our strength, and but our ultimate aim is to have cure of the patient and patient health care. And as you know, the definition of Ayurveda, Ayurveda says the first aim of Ayurveda is swasthasya swastha vikara prasamanam. The first aim of Ayurveda is preventive aspect, not the second aspect is curative aspect. To have a good health, Ayurveda gives different guidelines, particularly the dinacharya, the rutucharya, how to live a good lifestyle. Ayurveda gives a long thing there, and we are also working with Ministry of Tribal Welfare, Hota and Government of Odisha. Particularly, we are working in the Mayurbhanj district. We are going to have start programs in the Mayurbhanj district of Odisha and other part of the country. So, in this way, I thank the organization for giving me the opportunity, and if any organizations of Odisha or other of a report with a good proposal comes, then we are here to have collaborative research work for the state there. Thank you. Thank you, sir. Now request to Chief Guest Dr. Bharti Pravin Power to speak something on dice. नमस्कार. नमस्कार. हेवी ब्रेकफास्ट. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार बिसोई जी, श्री संजय जेना जी, मेरे साथ उपस्थित मान्य सौ मृदुला, यहाँ सभी उपस्थित मान्यवर जो कि हेल्थ कॉन्क्लेव में आज अपने चर्चा विचार साझा करने हेतु आप सभी उपस्थित मान्यवर, सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ जी की भूमि और भगवान लिंगराज की नगरी भुवनेश्वर में आकर खुद को मैं धन्य महसूस कर रही हूँ, और विशेष रूप से मैं ऑर्गस ग्रुप की सभी टीम को और माननीय मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाई प्रधान जी को और मृदुला जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा से ही कॉन्क्लेव हो या विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हो, ये जनजागर करने के लिए हमेशा से ही प्रयास किया है, और उनका कहना है कि इस तरीके के चर्चा, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉन्क्लेव एक नई दिशा देते हैं। और जब भी ऐसे कॉन्क्लेव होते हैं तो आपने सुना अभी प्रोफेसर आचार्य जी को, प्रोफेसर बिसोई जी को, कि उन्होंने कई बातों पे प्रकाश दिया कि आज की आवश्यकता क्या है, आज का हेल्थ सेक्टर का काम कहाँ जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया कि नहीं, सिखाया कि नहीं। देखो, जिस देश में पीपी किट ना बनती हो, मास्क नहीं, वेंटिलेटर ना बनता हो, आज वही हमारा भारत देश एक्सपोर्टर बन गया है, एक्सपोर्टर बन गया है। देखो ये उपलब्धि, और जब ये करने की क्षमता हम में है, ये ताकत हम में है, तो इस ताकत को हमें और बढ़ाना है, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और हमने सभी देखा कि हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि भारत अब G20 की अध्यक्षता कर रहा है 1 दिसंबर से,
उन शक्तिशाली देशों के साथ भारत ने इस अध्यक्षता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा संकल्प है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम, देखो ये कंसेप्ट ही कितनी बड़ी है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत ये कहती है कि हमें दूसरों के लिए भी करना है। वन फैमिली, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, ये जब सोच रखते हैं तो ये भारत की सक्षमता को दिखाना भी है कि हम तो हमारे लिए काम तो करेंगे, लेकिन हम और देशों के लिए भी सेवा करेंगे। और ये दिखा दिया है, कोरोना में हमने ये दिखा दिया है। संजय जी, हमने ये करके भी दिखाया कि जिस देश में पहले तो वैक्सीन आती थी और जाते जाते गांव-गांव तक पहुंचते पहुंचते 2-3 साल भी लगते थे। आप देखिए, थोड़ा हिस्ट्री में जाइए। लेकिन जब कोरोना का संकट आया और जब वेल डेवलप्ड कंट्री के सामने आया कि अब क्या, चाहे वो मेडिसिन हो, ट्रीटमेंट हो, वैक्सीन हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि अब भारत में कमी नहीं है, न ब्रेन पावर की न मैन पावर की। ये वैक्सीन बनेगा तो भारत में बनेगा। बजट भी दिया, एक्सपर्ट का ग्रुप भी बनाया, साइंटिस्टों का हौसला भी बढ़ाया और आज भारत 219 करोड़ का वैक्सीन, एक बेस्ट एग्जाम्पल ये हमने दिखा दिया है। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो और आगे जाके वसुधैव कुटुंबक की संकल्पना को हम जरूर साकार करेंगे। और हमने ये दिखा के भी वैक्सीन तो दिया ही, 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट करा। 150 से ज्यादा देशों को हमने मेडिसिन भी दिए। और आज जब हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं, हम बातें सुनते हैं, अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस सुनते हैं, तो वहां जाके एहसास होता है। मृदुला जी, हाल ही में मैं भूटान गई थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहां पे सभी देशों के मंत्री अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि कोविड के काल में हमने ये किया, अच्छा काम किया। हमने, किसी देश ने कहा कि हमने 30 लाख का वैक्सीनेशन करवाया, किसी देश ने कहा हमने 50 लाख का करवाया। तो ये ऐसे अलग अलग अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उस दिन मुझे एहसास हुआ और खुशी के आंसू भी थे, एक स्वाभिमान भी था कि मेरे भारत ने तो 219 करोड़ का वैक्सीनेशन किया, जो किसी के मुकाबले में नहीं हुआ था। तो ये ताकत को और बढ़ाना है। और जरूर हमारी इन कोरोना के काल में हमने ये भी देखा कि बहुत ही सभी ने इस चुनौती भरे समय को, सभी डॉक्टर्स, एक्सपर्टीज, आप सभी ने, सभी मान्यवर यहाँ उपस्थित है, वो सभी इस हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले दिग्गज है। आप सभी को, और सभी हमारी टीम हेल्थ केयर गांव-गांव तक पहुंची है। जैसा कि अभी हमने डॉक्टर शंकर को, डॉक्टर ओमकार के 2 एग्जाम्पल को सामने रखा कि 1 रुपीज क्लिनिक चलाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। मैं तो चाहूंगी कि आप सभी को, मतलब सभी के माध्यम से उनको और सराहना जाए। डॉक्टर शंकर ने जो लोगों की ट्रैवलिंग के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, और ये आज की नहीं, ये सालों से कर रहे हैं। ये कब होता है? जब ये विचारधारा यहाँ से आती है कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, तब जाके ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और मुझे लगता है ये कॉन्क्लेव में हमें ये भी दर्शाना है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, ये तपस्या हो, या आपने की हुई सेवा है, ये हमें दूसरों को भी दिखानी है ताकि और सब इसमें जुड़े। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, ह्यूज डाइवर्सिटी। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करे या सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करे। विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हम सबका उसमें योगदान होना बहुत जरूरी है। जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और जब हम 100 साल का वर्ष मनाएंगे
उत्सव मनाएंगे, तब ये जो 25 साल है इसका रोड मैप करना है, तो उस रोड मैप में हमारा कर्तव्य काल बहुत महत्वपूर्ण है और ये कर्तव्य काल इसी दिशा में जाना चाहिए। और हम करके दिखाएंगे, ये विश्वास तो है ही हमें, लेकिन ये विश्वास अन्य देशों को भी है। अन्य देशों को विश्वास है कि हमें भारत में जाके ट्रीटमेंट लेनी है। ये मैंने यहाँ नहीं देखा, ये मैं तो जब कॉन्फ्रेंस में गई, कतार हो या ओमान हो, उन देशों ने कहा हमारा प्रायोरिटी इंडिया है, ट्रीटमेंट के लिए हम इंडिया जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक्सपर्टीज है, प्रैक्टिस है, हमारा रिस्पेक्ट होता है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं तो कहती हूँ कि आप सभी ने, मतलब ओडिशा भी हमें टूरिज्म सेक्टर में आगे आना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टैंड ही ये है कि हम मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल ट्रैवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है उसको हमें हमारे साथ दूसरों की सेवा में भी देना है। मैं बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारा स्ट्रक्चर है, आशा कार्यकर्ता है, हमारे डॉक्टर, नर्स, इन्होंने बहुत ही चुनौती भरे समय में काम किया है। ऐसे समय में काम किया है कि घर से बाहर निकलने में डर लग रहा था। ऐसे कोरोना के संकट में हम लोग बाहर जाने में डरते थे, लेकिन हमारे सारे ये कोविड वॉरियर, हमारे हेल्थ की टीम अपनी परिवार, अपनी खुद की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में उतरे। और कईयों ने अपने परिवारजनों को भी खोया है, लेकिन इस चुनौती भरे इस कोविड के महामारी में उन्होंने सेवा के प्रति अपना भाव समर्पित रखा और काम किया। उनकी योगदान को हम याद करते हैं और मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन भी करती हूँ कि ये उनकी वजह से हो पाया कि आज हम सुरक्षित तरीके से उस संकट से बाहर निकले हैं। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मैं जरूर धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि संकट के काल में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज ओडिशा की प्रगति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के मार्गदर्शन में हमने ओडिशा के लिए लगातार अनेक प्रयास किए हैं। 2014 से देखेंगे तो 7 नए मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि यहाँ पे हुई है, जिसका मुझे बहुत बहुत आनंद है, खुशी है, जिसके लिए बजट भी दिया। और खास करके बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी सेवा मिले और पेशेंट को अच्छी सेवा मिले, इस हेतु ये मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई। 2013-14 में ये संख्या 8 थी और आज 22-23 में ये संख्या 15 तक पहुंची है। इस बात का मुझे आनंद है। और उसके साथ यूजी सीट्स जो है, जो 13-14 में 1050 थे, आज वो यूजी सीट्स बढ़कर 22-23 में हुए हैं 2325, लगभग दुगुने। तो ये एक विजनरी लीडरशिप होती है, तभी ये संभव होता है। और ये संभव होना तभी होता है जब सभी मिलके, साथ मिलके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसमें जुड़ता है, तभी ये संभव होता है। और मैं कहूँगी कि हमारा जो अभी डॉक्टर आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैं भी देख रही थी कि एक होलिस्टिक अप्रोच, एक आयुष मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी सुविधा देने के लिए साथ काम करे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। देखिए, एक गरीब को जब बेहतरीन सुविधा मिलती है, उसको जब अच्छी सेवा मिलती है, तो उसका सिस्टम में विश्वास और मजबूत हो जाता है। क्योंकि बेहतर सुविधा देना ये सिर्फ एक इलाज तक सीमित नहीं है, उसके न्याय को भी दर्शाता है कि उसको न्याय मिल रहा है इस सुविधा के माध्यम से। तो हमारा विजन है और हम तो वेलबींग में भी काम कर रहे हैं। आज अगर भारत भर में हमारे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़े हो रहे हैं, जिसमें से 1,22,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल हो गए हैं, तो उसका हमारा
एजेंडा ही ये है कि हेल्थ एंड वेलनेस में काम करें। अभी डॉक्टर बिसोई सर ने भी बोला कि किस तरीके से हमारे युवाओं के लिए है, चाहे छोटे बच्चों को लेके, चाहे वो डायबिटीज हो, कार्डियक का हो, एक संकट जैसा हम लोग देख रहे हैं। कैंसर का भी बढ़ता हुआ धोखा हम देख रहे हैं। तो ये वेलबींग में आके अगर हम ज़्यादा काम करें, स्क्रीनिंग में हम ज़्यादा काम करें, तो शायद और अच्छे से हम काम करके ये केसेस को कम करने में हमारा प्रयास है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी कहती हूँ कि ये इतना भी सीधा साधा नहीं है, क्योंकि आज हम सबको वहाँ पे जाके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सब सेंटर हो, उसमें जाके मिलती हुई सुविधा को भी हमें देखना है। आपके सजेशंस भी हमें चाहिए। आपके सजेशंस इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जो भी सजेशंस आएंगे, मैं माननीय संजय जी को कहूंगी कि वो भी हम तक पहुंचाए। आफ्टर ऑल जो आपकी अपेक्षाएं है और जो इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, ये एक ईज ऑफ डूइंग में जाने के लिए हमें भी मदद करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा आग्रह धरते हैं कि आप जहां भी जाए वहां के स्टेक होल्डर्स, वहां के एक्सपर्टीज के साथ जरूर बात करें। और मैं आज इस बात को लेके खुश हूं कि मेरा कार्यक्रम आपने और मृदुला जी ने और आसान कर दिया है कि इतने बड़े पैमाने पे एक स्टेज पे आप सब लोग ये अलग अलग चर्चा करने वाले हो। मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे हेल्थ कॉन्क्लेव होने चाहिए, इसमें से आपके सजेशंस आने चाहिए ताकि हमें एक दिशा मिलेगी। आज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जैसी योजना है जो बहुत बड़ी योजनाएं है कि जिसके तहत हम पेशेंट को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देते हैं। इससे आज हमारे भारत भर में 10 करोड़ फैमिलीज को हम कवरेज दे रहे हैं और लगभग 50 करोड़ बेनिफिशरीज इसमें जिनको आवश्यकता हो, जिसमें ट्रीटमेंट ऑपरेशन की अगर आवश्यकता हो तो उसमें मदद मिलती है। 4 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज ने इसमें से मदद ली है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गरीब परिवारों को अचानक से कोई संकट आता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उनके लिए ये हमारी माध्यम से मदद मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात का मुझे दुख भी है कि ओडिशा में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कोई अहमियत नहीं है। मैं यही कहूंगी कि ये योजना अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। यहाँ पे पता नहीं राज्य सरकार की योजना होगी, हम किसी को विरोध नहीं कहते, लेकिन अगर यहाँ का पेशेंट कई और स्टेट में जाता है, यहाँ से पेशेंट अगर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, पंजाब जाए, राजस्थान जाए, तो उसके पास अगर हेल्थ का आयुष्मान भारत का कार्ड हो तो वो वहाँ के हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन अगर हमारे राज्य में, ओडिशा में उसको मंजूरी नहीं दी है तो वो तो वंचित रहेगा। और आज तो जरूरी है कि हर एक पेशेंट को हम कवरेज दें, उनको सुविधा दें। बाहर के राज्यों से यहाँ पे जिनके राज्यों ने इस योजना को एक्सेप्ट किया है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखो ये डिफरेंस है, ये जानना भी जरूरी है। और हम तो सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि कृपया इससे जुड़ जाए ताकि दूर दराज गांव तक ये सुविधा मिले। लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और इसी दिशा में मुझे लगता है कि सोच विचार जरूर राज्य सरकार करेगी तो बेहतर होगा। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इस माध्यम से लगभग 64,000 करोड़ से ज्यादा बजट दिया गया है। ये क्यों? ताकि जब हमने देखा कि कोरोना के टाइम में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हमें महसूस हुआ, कई जगह पे कुछ सुविधा नहीं थी, हमें अचानक से इमरजेंसी में बेड लगवाने पड़े, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काम करना पड़ा, लैब की कई जगह पे कमी पाई गई। तो इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भविष्य में ऐसा पेंडेमिक तो ना आए, लेकिन अगर आता है तो इस दिशा में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करें कि लोगों को असुविधा ना हो। और इस दिशा से
आज हमारे उड़ीसा में भी लगभग 6,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आज हमें 1,347 करोड़ रुपए ओडिशा के लिए बजट प्रोवाइड किया कर दिया है ताकि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो और वो उसमें लैब की सुविधाएं है। हर एक जिले में अच्छी एक एडवांस टेक्नोलॉजी की लैब बने ताकि लोगों के लिए टेस्ट हो या ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू बेड्स हो, ये सुविधा बने। तो मुझे खुशी की बात है कि उड़ीसा में भी ये काम शुरू हुआ है। आज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी हमने देखा और मैं तो हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र भाई प्रधान जी, माननीय अश्विनी भाई वैष्णव जी, माननीय हमारे विश्वेश्वर जी टुडू, इन सभी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो हमेशा से ही ओडिशा के लिए या फिर हमारे उनके डिपार्टमेंट से हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, रेल के माध्यम से, जल शक्ति मंत्रालय, ये टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन किया है। तो ये गौरव की बात है कि हमारे ओडिशा के लिए भी ये टेक्नोलॉजी और बढ़ चढ़ के आज काम कर रही है, जिसका रिजल्ट हम देखें कि आज ऐसे अनेक पोर्टल बने हैं जिस पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस पोर्टल के माध्यम से आपके सुझाव हो या आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी हो, ये एक सुविधा मिली है। मैं टेक्नोलॉजी का माध्यम हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में भी किस तरह से किया, इसका ये एक उदाहरण देके समाप्त करती हूँ कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये डिजिटल मिशन के माध्यम से शुरू किया है, जिसमें हमारे आभा आईडी बन रहे हैं। आभा आईडी का मतलब है कि जब पेशेंट पहले फाइल लेके जाते थे, मेरा फाइल में लेके जाओ डॉक्टर के पास, उसके बाद लैब रिपोर्ट देखे, वहाँ से मैं जाऊँ एक्सपर्टीज के पास, तो अभी ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के एक ऐसा अकाउंट बनाया है कि वो अकाउंट में ही हमारा रिपोर्ट भी आएगा, वो लैब से रिपोर्ट डॉक्टर को भी मिलेगा और ये सब एम्पैनल्ड होगा, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट के भी साथ, और हमारे पेशेंट को सुविधा मिले ताकि डिसीजन लेने में जब लेट होता है तो जान भी चली जाती है। तो ये सब बचाने के लिए आज अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो ये आभा आईडी उस दिशा में लिया गया एक सराहना कदम है। शायद ये आज नहीं, लेकिन 10-20 साल के बाद आप लोगों को समझेगा कि इसकी शुरुआत बहुत पहले प्रधानमंत्री जी ने की थी। मैं भी एज अ डॉक्टर मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ़ोन पर हमारे फाइल्स होंगे, विदाउट कैरिंग द फाइल्स आई विल अटेंड द डॉक्टर एंड लैब रिपोर्ट्स आएंगे। लेकिन जब ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम आगे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है तो इसका अनुभव कर रही हूँ आ रहे हैं। मैं फिर एक बार ऑर्गस न्यूज़ को, जो कि हमेशा से एक द ट्रू वॉइस ऑफ ओडिशा के माध्यम से काम कर रहे हैं, इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने के लिए और खास करके हेल्थ को अवेयरनेस के माध्यम से आगे आने के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। इसमें उपस्थित सभी हमारे एक्सपर्टीज, विशेषज्ञ, दिग्गज, वो बहुत ही अच्छे सुझाव देंगे, उसकी भी मुझे प्रतीक्षा है। और यह कॉन्क्लेव हमारी ओडिशा के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के दायरे को बढ़ाने के तरीकों पर जरूर प्रकाश डालेगा और अपने व्यक्तिगत अनुभव भी आप साझा करें ताकि आपके इस अनुभव से अनेकों को प्रेरणा मिलती है। जैसे इन दोनों डॉक्टरों ने आज हमें प्रेरणा दी कि सिर्फ भाव होने चाहिए, सेवा भाव मन में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के प्रति हमारा दायित्व निभा सकते हैं। ये दो डॉक्टर ने आज हमारे साथ जो अनुभव साझा किए, तो मुझे लगता है ऐसे अनुभव, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आने चाहिए ताकि हमें और प्रेरणा मिले। मुझे इस कॉन्क्लेव में एक अपनी मूल्यवान आपके योगदान के लिए और बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हम सब मिलके आइए, हम सब मिलके काम करें। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर देने के लिए हम प्रतिबद्ध है और एक भारत
स्वस्थ भारत इस दिशा में हम काम करें और सबका योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ओडिशा। धन्यवाद मंत्री जी। वर्तमान अनुरोध करी मंच उपरक आसवाई एक्टर पृथ्वीराज सतपथी। आपण तांको स्क्रीन रे बहुत समय धरी देखिछंती एवं तांका एक्टिंग माध्यम रे मध्य से दर्शकों को पूरा बांधी रखिछंती। तांको वेलकम करिवो स्टेज को, तांको फेलिसिएशन करबा। मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगी, उनको फेलिसिएट करेंगे। श्री सतपथी सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका होची सी होचंती रेगुलर ब्लड डोनर, जे सब बेले ब्लड डोनेट करबा पई। तो वर्तमान रिक्वेस्ट करबी मंत्री मैडम को मध्य मेमेंटो प्रदान करबा पई। अनुरोध करूँ वोट ऑफ थैंक्स दबा को सीओ अर्गस न्यूज। थैंक यू सर। वर्तमान अनुरोध करूँ वोट ऑफ थैंक्स दबा को सीओ अर्गस न्यूज श्री प्रकाश साहू। आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर पावर जी, आज के अन्य अतिथिगण डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर बिसोई एंड मेरे साथी संजय जैना जी डायस पे एंड नीचे बैठे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स एंड मीडिया के बंधुगण। जैसे कि मेरे साथी संजय जी ने शुरुआत में कहा है कि अर्गस न्यूज़ हर वक्त अपना जो टैगलाइन है सत्य के संधान में काम करता है, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, इन परसुएंस ऑफ ट्रुथ, और हर वक्त लोगों के इशू के साथ जुड़ के रहने के लिए कोशिश किया है, चाहे रेगुलर न्यूज़ भी हो या नॉन न्यूज़ हो या कुछ न कुछ इशू के साथ, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे अनेक प्रोग्राम हमने कोशिश करने के लिए आप लोगों के सहयोग से किए हैं। मैम, वी आर द यंगेस्ट चैनल इन द स्टेट, only 1.5 years, and we have tried to give our best, and thank you all, I mean the people of Odisha and the Odia diaspora across the world,
with such a short span of time, they have given such a good, love and affection and accepted us. And with their love and affection, and we always try to give something good every time, every day. And particularly this health sector people, from the beginning, from the day one, we have tried to get connected, and especially the health program. We have a special program every week called Prescription. On that platform, we try to get good doctors. आज जितने भी डॉक्टर रामचंदानी साहब हैं, डॉक्टर होता है, डॉक्टर सुभाष साहू जी हैं, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर हमारे साथ आए हैं. लोगों के साथ जुड़ने के लिए हर वक्त हमने कोशिश किया है. डॉक्टर महापात्र साहब यहाँ पर बैठे हैं, आपके एम्स में दिल्ली में रहे, उड़ीसा में रहे, अभी उड़ीसा के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं. तो हर वक्त हमको प्रेरणा दिए हैं, कोशिश किए हैं. और उसके साथ साथ यहाँ पर यूएस से आए हैं डॉक्टर दास भी हैं, कलिंगा हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन आज हमारे साथ कोइंसिडेंटली उपस्थित है. बाकी अन्य समस्त हॉस्पिटल ग्रुप हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं. मैं यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण एंड उपस्थित जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, स्पेशली एज सिस्टर मृदुला जी एंड बाकी डॉक्टर्स लोग जो हैं, सबको मैं ऑर्गस परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ. स्पेशली जो हमारे नॉलेज पार्टनर है, साथी, लगता है कि वो हमारे रियल साथी रहें इस प्रोग्राम के माध्यम से. हम लोग तो अनपढ़ गवार हैं. स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कहेंगे तो डॉक्टर बिसई ने जो कहा कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर लोगों से भी ज़्यादा है. वो डिजीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, हम अपना स्वास्थ्य के रखवाल हम खुद कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा. तो सेम कंसेप्ट में साथी काम कर रहा है. अपना स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए केवल एक डॉक्टर या हॉस्पिटल काम नहीं करता है, सब स्टेक होल्डर का एक जिम्मेदारी, इंक्लूडिंग द पेशेंट्स जो वहाँ से ट्रीट होके जाते हैं, उनका लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक सचेतनता लाना, इस कंबाइंड एफर्ट जो मैडम ने कहा आज की एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. तो यह जो कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका एक छोटा स्वरूप है साथी, जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को लेके लोगों तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है. तो स्पेशली डॉक्टर अशोक महापात्र, डॉक्टर अशोक चौधरी जो हमारे साथी हैं, दिल्ली में बैठे हैं, हर वक्त किसी न किसी काम में माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका आग्रह रहा. ये टोटल प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन एज ए टेक्निकल नॉलेज पार्टनर के हिसाब में उन्होंने पूरा मदद किया. उनको भी मैं ऑर्गस परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मिस्टर साहू. तेबे वर्तमान आमर इनागुरेशन सेक्शन सरी. वर्तमान 10 मिनिट समय गैप रही एवं तापर डिबेट सेशन आरंभ हो. जमती पूर्वर सूचना दौलू आम जे आम सहित अभिज्ञ डाक्तर माने रही जो डिबेट सेक्शन रे आमर एग्जीक्यूटिव एडिटर दुर्गाशीष रे एवं एसोसिएट एडिटर शांतिभूषण रे एवं डिबेट सेक्शन को आग को नेबे. आपण मानकर समस्त प्रश्नर डॉक्टर माने उत्तर रखिबे. तबे जमती ये कार्यक्रम पर सहयोग हाथ बढ़ाई एडवर्टाइजर्स का ना को पुणी थे कही रखुची जे वर्तमान टाइटल स्पॉन्सर शिक्षा अनुसंधान, नॉलेज पार्टनर साथी, स्पेशल पार्टनर अमरी हॉस्पिटल्स, परस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल एवं एसोसिएट स्पॉन्सर कलिंगा हॉस्पिटल लिमिटेड, विकास हॉस्पिटल्स, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. धन्यवाद.
स्वास्थ्य सबुठु बड़ संपद मात्र आपण सचेतन आपणको स्वास्थ्य को नहीं खास आपणको स्वास्थ्य पाई आमर विशेष कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन जोठी आपण सीधा सड़क कथा होई परिबे बछा बछा अभिज्ञ डाक्टर सह प्रति रविवार अपराह्न 3:30 रे केवल अर्गस न्यूज स्वास्थ्य सबुठु बड़ संपद मात्र आपण सचेतन आपणको स्वास्थ्य को नहीं खास आपणको स्वास्थ्य पाई आमर विशेष कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन जोठी आपण सीधा सड़क कथा होई परिबे बछा बछा अभिज्ञ डाक्टर सह प्रति रविवार अपराह्न 3:00 रे केवल मात्र आपण सचेतन अर्गस न्यूज ओडिशार स्वर सत्यर संधान रे सबु बेले लोकंक साथी रे सचिवालय सीएम कठारु ओडिशार पुरपल्ली रे अपांत अंचल रे थिबा कॉमन मैन रो सीएम रो तथा को आमे सेति की गुरुत्वर सहित देखेबा पई आमे बद्ध परिकर दायित्व संपन्न एवं लोक विश्वासर प्रतीक प्रगतिशील किंतु विकासर शेष धाड़ी रे मनीषर बंधु खबर सह प्रथमे पहुंचे ओडिशार कोण अनुकोणरू खबरर पूरा विश्लेषण राजनीति अपराध मनोरंजन क्रीड़ा व्यवसाय विज्ञान देश विदेश आहरी अनेक नूतन ज्ञान कौशल संभार रियल टाइम 3D ग्राफिक्स वर्चुअल रियलिटी क्लिष्ट प्रसंग को सरल भावे 3D चित्र माध्यम दर्शकों को बुझेबार पूरा व्यवस्था टेलीपोर्टिंग एवं ऑगमेंटेड रियलिटी ये सब व्यवस्था अर्गस को करिछि राज्यर ज्ञान कौशल आधार रे आगुआ चैनल अत्याधुनिक न्यूज रूम और स्टूडियो 200 सांबादिक उपस्थापक परदा आग और पछर सृजनशील तथा टेक्निकल मानव संबल खबर लोक समस्या को प्राथमिकता सह विविध क्षेत्र रे ओडिशार प्रगति रे सहायक हेबा पई दृढ़ संकल्पर सह काम करूछे आमे लड़ीबू साधारण ओडियांक न्यायर लड़ी ये भी पार्टी रे तुंडी देई बसु किंतु आमे कहिबू रोक काहाकू पचारिबे प्रश्न किए देब उत्तर आपणक प्रश्नर 42 मंच प्रश्न कल आमे आसिबू आपणक सह मिसिबू आउ जवाब मागिबू जवाब मागुछु ओडियांक हाथ रे पत्थर एठी जीवन पाए सुताक्षरे Odisha Health Connect 2022
समस्त को अनुरोध करूँ सीट रे टिके बसी जातु आमर डिबेट सेशन खूब शीघ्र आरंभ हम एवं जहाँ को कंडक्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर दुर्गाशीष। पुणी थे समस्त को अनुरोध करूँ जे निज निजर सीट नहीं जातु कारण किसी समय भितर आम डिबेट सेशन आरंभ डिबेट सेशन रे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रहिबो आपण माने मध्य आपनको प्रश्न जो पैनलिस्ट माने रहिबे बा अभिज्ञ डॉक्टर माने रहिबे से मानको मध्य पचारि परिबे। Kindly request to all, please take your seat. समस्ते बसीगला आम आम डिबेट सेशन स्टार्ट करवा खूब शीघ्र आम पाखे अभिज्ञ डॉक्टर माने मध्य रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट 2022 को आपण समस्त को स्वागत करुछु। मु दुर्गाशीष। ये सेकंड सेशन आरंभ हम, ये इंटरैक्टिव सेशन हम। जो माने एठी दर्शक अच्छी, जो माने विभिन्न अभिज्ञ डॉक्टर माने अच्छी से क्वेश्चन पचारि पारिबे एवं जो माने पैनल अच्छी दे विल आंसर एवं विभिन्न टॉपिक अच्छी से टॉपिक उपरे जड़े जड़े व्यक्ता जो माने तांको क्षेत्र रे पारदर्शिता हासिल करिसंती, जो माने से अभिज्ञता हासिल करिसंती से माने से टॉपिक उपरे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत प्रथमे तांकर मत रखिबे, तापर आम इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट करिबा। ए सेशन होउछि लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। आपण मने थियो आपण आगुरु जतबे कैंसर ना सुनुथिले अधा लोक 50% लोकंकर सेतेबेले मानसिक भाबे वीक हे जाउथिले जे आमे आ बंचिबुनी। विभिन्न रोग कहतु, चेकअप कहतु, ता सहित जिते भी अच्छी आपण
टेस्ट गुड़ा कहतु ये टेक्नोलोजी बहुत आगू जाइए खास करके कोविड पर पैंडेमिक पर टेक्नोलोजी आगू आसी खास करके भारत में ये टेक्नोलोजी आगे कि आम आज आसी कौटी पहुँचे खास करके ओडिशा रे आम से टेक्नोसावी हो पारे कि कारण जदि आम देखा ताले टेलीमेडिसिन आसीला जो कोविड टाइम रे बहुत हेल्प करथिला मान जो माने रिमोट एरिया रे कहतु छोट छोट सिटी मानक से भी फोन करके डॉक्टर को कंसल्ट करथिले सेटा समस्तकर से एक्सपीरियंस थिबो मोर भी अच्छी ये बहुत जन डॉक्टर अच्छा जहाँ को मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके देखी परामर्श नहीं बोधे से जो मैंने उपस्थित अच्छा से निहाती धन्यवाद देवाई चाहिए जे बहुत ही हेल्प कर केवल ये नुह जो मैंने भी हजार हजार डॉक्टर ये अच्छा ओडिशा काम करुँच समस्त अवदान अच्छे पैंडेमिक को मुकाबिला करिबारे कोविड रो मुकाबिला करिबारे एवं जो कहते द्वितीय भगवान डॉक्टर को एवं सेटा प्रकृत में सही समय देखा जाए जीवन को खातिर न करिकी से कोविड बेल को पैंडेमिक बेल को लोकों को सेवा को आसछंती एवं द्वितीय टॉपिक जहाँ रही आमर द्वितीय सेशन टॉपिक लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर मु अनुरोध करने चाहिए जो मैंने अच्छा आमर आज ये अतिथि अच्छा जो मैंने मत रखिए प्रथमे अनुरोध करी प्रोफेसर अशोक महापात्र सर को वाइस चांसलर सोआ यूनिवर्सिटी फॉर्मर डायरेक्टर एम्स भुवनेश्वर समस्ते जानते सर जगा कालिया डॉक्टर भाव बेस जनाशुना जुआड़े गले भी आम न्यूज करूँ समस्त पचार जगा कालिया सार केमती अच्छा तो सार को समस्ते जानते परिचय बिल्कुल भी आवश्यकता ना मुझे अनुरोध करी सर बसंत मुझे अनुरोध करी डॉक्टर अशोक चौधरी सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेपाटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट नारायणा हेल्थ गुरुग्राम एवं डॉक्टर अशोक चौधरी निजे गोटे ग्रुप से माने करिसेंती जोठी एठी भुवनेश्वर रे विभिन्न स्थान रे से माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे से माने हेल्थ चेकअप कैंप करूछंती बढ़िया साथी ना रे से अनुष्ठान करिके से माने लोकन को पाखरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाउछंती मु अनुरोध करिवि डॉक्टर विजय कुमार साहू को सार होउछंती सीनियर रीजनल डायरेक्टर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं अनुरोध करी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव सीओ एंड डीएमएस अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर प्लीज कम ऑन टू स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर सुहास बसंत आर्यध्यन को रीजनल डायरेक्टर पारस हेल्थ केयर एवं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र मेडिकल सुपरिटेंडेंट आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आम द्वितीय सेशन लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर एवं ये जो मैंने अच्छा दर्शक भाव बस अभिज्ञ डॉक्टर मैंने अच्छा से मैंने प्रश्न करेंगे कि प्रथम मुझे कही रखुच्छी प्रथम टॉपिक अच्छी से टॉपिक उपर जो मैंने अच्छा आम एक्सपर्ट अच्छा से 3 ରୁ 4 मिनिट प्राथमिक मंतव्य रखिए तापर आम इंटराक्शन सेशन स्टार्ट करिया प्रथम अनुरोध करी प्रोफेसर अशोक महापात्र को फ्यूचर हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन उपर से प्रारंभिक अभिभाषण रखिए डॉक्टर महापात्र सर से Jai Jagannath, good afternoon. I think we are all here for a good cause. From the very beginning, I thank Argus for their dedicated effort to have health conclave. I think we always say, Nacha Vidya Samo Bandhu, Nacha Vyadhi Samo Ripu. We understand what is the significance of disease in a life. That is the reason why Markandeya Rishi said, that Dehi Saubhagya Arogyam, Dehi Me Parama Sukham. You cannot be happy without Arogya. So what you value in your life is good health rather than much more wealth. Your wealth has no meaning without good health. So we always understand health is a priority for a person for happiness, for samruddhi development and from prosperity and for long life. So everything if you have except a good health, it doesn't matter what you have. So we must give utmost importance to our good health. And what is health? As health is defined by WHO, 1948, it was physical, mental and social well-being. Just after the Second World War, when WHO formed, after some time they made a committee, they said physical, mental and social well-being. After 50 years of this definition of health, physical, mental, social, they have a 58-member committee of WHO to evaluate is the world is happy, healthy, prosperous or not. To our surprise, they found they are not happy. So what was missing link in good health? Missing link in good health was spiritual health.
So they redefined the health in 1998 by WHO panel of 58 countries, complete physical, mental, spiritual well-being. We may have very good physical health, everything, but spiritually unhealthy, you cannot be taken as a good, healthy and prosperous human being. So I would start telling that if you have to have a healthy body, you have to have a peaceful soul and stable mind. So every disease is nothing but the unstable mind and disturbed soul. So if you believe in the philosophy of body, mind, soul, it is soul who is to be peaceful, mind has to be stable and body has to be healthy. If we understand the concept of good health, it is three part of the thing: body, mind and soul. That is why at Harvard Medical School, every year in August, there is a conference called Body Mind Medicine. At Brahma Kumari Ashram and Mount Abu, they also discuss on body, mind and soul medicine. At AIMS Delhi, every year February, our physiology department conduct conference on body, mind medicine. So we understand what is the role of peaceful soul, stable mind and a healthy body. If you have a good coordination between the three, you are not going to suffer from disease. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बढ़िया कथा कहले सर बहुत गुड़े प्रश्न अच्छी बट टे वेट करवा फास्ट राउंड सारीदे जो मैंने अच्छा प्रथम प्राथमिक अभिभाषण शुणीनवा आमर जो ओडिशा हेल्थ कनेक्ट 2022 यार टाइटल स्पॉन्सर अच्छी शिक्षा अनुसंधान, नॉलेज पार्टनर साथी, स्पेशल पार्टनर आमरी हॉस्पिटल, एसोसिएट स्पॉन्सर पारस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, कलिंग हॉस्पिटल्स लिमिटेड, विकास हॉस्पिटल्स, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ये आमको सहयोग हाथ बढ़ाई। बर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर अशोक चौधरी को, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेपाटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट, नारायण हेल्थ गुरुग्राम, डिजिटल हेल्थ केयर उपर से वक्तव्य रखिए। डिजिटल हेल्थ केयर राइटली सेड एबे देखो आम समस्त पाखे जोड़ा कहते हेल्थ बेस्ट किसी ना कि आप अच्छी गोटे हेल्दी फाई मी देखो जो आप खाइबार कैलोरी आसी जाऊँगी आप समस्त निजर के स्टेप्स है के किलोमीटर्स कले के कैलोरी बर्न है। सो यहीटा जो एवं आसी दिस इज ए पार्ट आगे आगू बढ़ुची आप देखिए जो कि मोबाइल यूजर इट हैज नाउ एक्सटेंडेड मोर देन 30 crores एंड एबे जो ट्राजेक्टरी आसूची फॉर द कंट्री 2018 तो रूरल पॉपुलेशन यूजिंग स्मार्टफोन इज इंक्रीजिंग। तो यहीटा है आमर हेल्थ टेक्नोलोजी को लेकर आगू जावाटा बहुत इजी तीन जिस करें हेल्थ ट्रैकिंग करें कि आम गोटे लोक देखिले फॉलोअप है सी केमी आसूँ हेल्थ मॉनिटरिंग एवं गोटे आप आस जो थी आप हेल्थ मॉनिटरिंग माने तार पॉपअप्स आसो कि आपंकर आज बीपी देखी ना इवन के आईफोन अच्छी कि आप टाइम है ठिया हूँ। सो दीज आर हेल्पिंग नाउ एंड देन थर्ड इज डायग्नोस्टिक्स। आई थिंक पार्थ इज हियर, ही इज ए एक्सीलेंट चाप, ही हैज डन ए आप इन ओडिशा जो थी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी जस्ट पुट योर फिंगर लाइक ए पल्सक्स से आपंकर पाइबे सुगर, हिमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन एंड सैचुरेशंस। मैंने सच ए वंडरफुल आइडियाज कमिंग अप दैट नॉन इनवेजिव लोक अधा डरती आम टेस्ट हाँपाई कि ब्लड जावाई कि ब्लड गला टेस्ट हम रिपोर्ट आसो। सो नाउ द डिजिटल हेल्थ इज नाउ टेकिंग लैट। देन थर्ड है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पे ऑल्सो बिकज आप जानीपारे डाटा कौन रोग आसूँ कौन मेडिसिन कंजम्पशन अच्छी कौन इन्वेस्ट अच्छी दैट विल गिव ए ट्रेंड एंड ट्राजेक्टोरी। सो 2010 कौन थी 2020 कौन अच्छी 2030 कौन हम सो दैट योर पॉलिसी कैन बी गाइडेड एज पर दिस। सो डिजिटल हेल्थ डिजिटल मिशन जब कहते मैडम सो नाउ इट इज द फ्यूचर फॉर द स्टार्टअप्स, फॉर द इनोवेटिव रिसर्चर्स as well as for the business house as well as for the common man. So digital health is a big future, it is expanding like anything and by 2030 maybe most of the corporate hospital will going to be paperless and most of the government sector say madam abha hochi then by 10 years also will have a data. So digital health is a part, digital also give you a huge potential for the employment also. So एटा को हमें केमिति नहीं परिबा ता पे मो पाखे साइड रे अछन विजय साहू, he is a patent scientist and he is also one of the person NIDC रु सब अप्रूव कर टेक्नोलोजी पाई मिनिस्टर ऑफ साइंस रु। तो ये आम हेल्प नहीं पारिबा एंड हेल्थ कनेक्ट इज थ्रू दिस आई कैन रीच टू द मिलियंस ऑफ दी आइदर ओडिया हूँ बाहर हूँ दे शुड थिंक दैट डिजिटल हेल्थ इज ए पोटेंशियल फॉर देम टू एक्सपैंड द हेल्थ केयर नीड एंड दैट कैन बी डन अफोर्डेबली एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल and also it is acceptable not in urban, it can be also in the remote areas also. So that is the future. We have to think that digital health is going to revolutionize the health in future. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक चौधरी जो कथा कहते इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लान रखिए नेक्स्ट 5 years जहाँ आकलन होची
जे डिजिटल हेल्थ सेक्टर रे 80% इन्वेस्टमेंट बढ़िबो डिजिटल सेक्टर रे एटा सेंट्रल गवर्नमेंट तांकर जहाँ विजन अच्छी जहाँ प्लान करुछन आउ इंटरेस्टिंग फैक्ट गोटे आसुची जतले नेशनल मीडिया रे जो खबर प्रकाश पाउची जतले कोविड हेइतिला तो नॉर्थ इंडिया रो जो डॉक्टर माने थिले प्राय 80% डॉक्टर से आडप्ट करथिले टेलीमेडिसिन को एवं जदि देखिबा हमें साउथ और वेस्टर्न रे एटा 50% थिला बट ओडिशा जो कि बिलोंग्स करुच्ची ईस्टर्न ओडिशा रे ईस्टर्न इंडिया रे एटा ओनली 30% थिला बट आम एक्सपेक्ट करिया समस्त एक्सपर्ट माने अछंदी सेटा इंक्रीज करिथिबो एबे टेलीमेडिसिन बा कंसल्टेंट्स जो नबा ऑनलाइन रे सेटा बढ़िथिबो निहाती मु ना मु रिक्वेस्ट करिवि डॉक्टर विजय कुमार साहू को सीनियर रीजनल डायरेक्टर एनआरडीसी मिनिस्ट्री ऑफ एस&टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक अच्छी हेल्थ केयर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स सर Good afternoon, everyone, and thank you, Argus, for giving this platform to share our thought and also how we connect the dot, bringing mind to market. So today, technology plays a very important role in tracing, testing, and treating of COVID-19. We lost many of our known faces, but certainly these challenges create opportunity. And I am privileged and happy to inform you that Honorable Minister also touched upon India was importing PPE kits. We transfer and commercialize as many as technology to the industry and MSME, those who are making the product, making us proud, and India is competitive in exporting PPE kits. Not only to that, today if you will see in India, I am sitting at Visakhapatnam, the largest medical devices ecosystem has developed in India under Make in India at Visakhapatnam. At that time, during that COVID, we started first RT-PCR. More than 500 ventilator has been supplied. So here the opportunity what we have created at that time also we got a business, created job opportunity, and also mitigating the challenge, and technology plays a very important role. And as far as technology, this sector, health sector, we must not confine to particularly medical. All issues what we are facing, lot of startup, those who are making us proud in very interesting platform, not only regionally at globally also. Some of the doctor who have a startup here who are sitting in front of me, and they are part and connected to the WHO Health Center, because Visakhapatnam is blessed with a WHO Innovation Center. Dr. Ashok Badmali is also here. The Sanjeevani QPR, that CPR, that plays a very important role, and also WHO was quite interesting how that can be connected to the mass in manufacturing. Not only to that, we have seen how startup like I will say in Bhubaneswar, one of the startup who got an opportunity of doing RT-PCR test as a startup. So in that challenging time, these are the people who are making the difference, and also how our doctor, researcher who are creating such kind of technology in the form of IP by doing value addition. My role is to do the value addition, market survey, business intelligence, intellectual property protection, because India is lacking that part in the Global Innovation Index. My role is to support them, handhold them, shoulder them, how a technology developed at lab scale can be transferred, commercialized to the industry, MSME and startup. That's we do, and that we did during pandemic also, and lot of startup, MSME and also industry making us proud in creating such indigenous product. And that's the role I will say in a collectively we are doing, because we are bringing mind to the market, lab to the land, technology at bedside to the bedside. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू. नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, CEO DMC अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर, उनका टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म पर आप बात करें. थैंक यू. Namaste everyone, and thank you August for the invitation to this panel discussion today. On medical tourism, I would like to first share that this medical tourism started where people used to travel international boundaries to seek medical care. And today, if you look at analysis of Indian geography, most of the people, if I were to analyze, coming to Odisha or going out of Odisha, there are certain things, certain diseases, ailments get addressed outside the state boundaries. So, primarily if you look at Indian healthcare, India is growing to become the hub of medical tourism in the future, the way Indian healthcare infrastructure is coming up.
No doubt we have combination of well-trained doctors as an expertise, but what is currently required is to bring them into right infrastructure to drive disease management or appropriate management of the disease as per incidence of disease which needs to be addressed by the state. So currently if you look at domestic market where we stand today, a lot of patients move out of the state for seeking medical care. And if we are able to address by strengthening the infrastructure, because currently if I look at today's date, as comparing 12 years ago when I visited the state, a lot of things have come up on a positive side. We have strengthened the healthcare infrastructure. We have got a lot of talents who are working outside from Odisha, and they are successfully doing a lot of good work in the state to stop transfer of patient outside the state. And that is what is really required in making a hub, Odisha today in the future. The way forward in which we need to address in certain areas to strengthen the medical tourism would be looking at liver transplant program, looking at aesthetics program, and developing full-fledged fertility services apart from joint replacement. Because there are certain things which we need to address what is the requirement of the state to reduce flow out from the state, and also to get other states' patients coming to this state is the requirement. So with that I would say, apart from the talent base, certain healthcare infrastructure needs to be strengthened, and that's where we are moving. As in Apollo Hospital, I can share one of the things that we are right now focusing is reducing the length of stay in the hospital to be the key driver of patient coming to the hospital. Because primarily what has been earlier happening is the conventional surgery driving the patient to stay for a longer duration is one of the key focus that we are really working on, and also on the clinical outcomes to build good amount of medical tourism flowing into the state. Thank you. Thank you, Dr. Alok Srivastava. Now may I request Dr. Suhas Basant Aradhe वो अपना मंतव्य रखे, हेल्थ केयर फॉर ऑल. Namaskar, Pranam. I'm Dr. Suhas Basant Aradhe, Regional Director, Palace Group of Hospitals, situated at Patna. I have traveled at least 10 states and 20 cities in our country, right from Kerala, Kolkata, now in Bihar, Bhubaneswar also I have worked. The emphasis which I am giving now, I will cite two examples. मैं आपको दो examples दे दूँगा. साथ में हमारा एक very special dish हमारी ओडिशा की होती है डालमा, उसके बारे में कुछ कहूँगा और बाद में एक श्लोक बताऊँगा. बस 5 मिनट का काम है मेरा. बट पॉइंट ये होगा कि हेल्थ केयर फॉर ऑल, इंटीग्रिटी, कवरेज एंड कॉम्पिटेंस. एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे एकदम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट था, ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसको आइडेंटिफाई किया गया था. बट कैसे हो गया प्रोसेस देखिए. वहाँ पे जीविका आशा वर्कर के पास गांव की जो पेशेंट थी वो पहुँच गई. हफ्ते में एक बार उसको वहाँ जाने की आदत थी, तो बताया कि ऐसे ऐसे कुछ है ब्रेस्ट का, मुझे कुछ नेट पे देखा है, आप ज़रा चेक कर लीजिए. आशा वर्कर ने कुछ उसको मालूम था वैसे चेक कर लिया. तुरंत ही बगल में उसने सजेस्ट किया कि बगल में ही एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रेडियोलॉजी सेंटर है, वहाँ चले जाइए. वहाँ जो कुछ स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया उनका, हार्डली 1000 रुपीज़ में हो गया. वहाँ पे कनेक्ट था पुणे बेस्ड वन ऑफ दी रेडियोलॉजी सेंटर्स के. वहाँ से इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो कुछ उनको टेस्ट हुई स्क्रीन पे पता लग गया कि शायद कैंसर है. तुरंत ही आशा वर्कर ने बताया कि यस, हमारे पास स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीम है, इमीडिएटली चले जाओ. कोलकाता में XYZ हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँच गई. स्कीम के अंडर उसका ट्रीटमेंट हो गया. वेरी राइट ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हो गया. कैंसर गॉट क्योर. द पर्सन इज स्टेइंग अलाइव 5 years हो गए. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2,
अगेन डिस्ट्रिक्ट में 18 साल की बच्ची है, उसकी शादी होनी है, उसको थोड़ा एपिलेप्टिक अटैक आया, पता लग गया कि कुछ प्रॉब्लम है, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, जेड लोकेशन, सब जगह 5,000, 10,000, 15,000 टेस्ट हुए। फैमिली के पास जो पूंजी थी ख़त्म हो गई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में। ओके, माइनॉरिटी कम्युनिटी की लेडी है, उसका शादी होना है, पता नहीं लगा, अचानक CTVS सर्जन के पास चली गई, पता नहीं क्यों गई, पता लग गया कि उसके हार्ट में एक कैंसरस ग्रोथ है, उसके कारण कुछ पार्टिकल्स जाके ब्रेन में स्ट्रोक होने के कारण थोड़े सीजर्स आए हैं। तुरंत ही उसका 1,80,000 डाल के ऑपरेशन हुआ, वो ग्रोथ चला गया, उसको चंद मेडिसिन देने के बाद शी इज स्टेबल नाउ, शी इज़ विलिंग टू फाइट एंड गो फॉर अ मैरिज। बट उनके फैमिली में पूरा घर बेच के 1,80,000 जमा किया, आयुष्मान स्कीम लागू है, सब कुछ उपलब्ध है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तो पब्लिक प्राइवेट एंड फैमिली पार्टनरशिप कहाँ काम करती है? फर्स्ट एग्जाम्पल में। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आशा वर्कर लाइक अ फैमिली केम फॉरवर्ड, पब्लिक पार्टनरशिप with private did the testing, there is no profit motto, the integrity is there, okay. The support of competence of somebody sitting in Pune with artificial intelligence is there, so you get the competency there, and the coverage of Ayushman or Swasthya Sathi scheme is known to Asha worker, the person is already enrolled, 1 रुपया घर से खर्चा नहीं हुआ, जो 500,000 रुपये का टेस्ट हुआ उसको भी लोकल मुखिया ने उसको वो कैश में दे दिया। तो शून्य एक्सपेंस, पब्लिक प्राइवेट फैमिली पार्टनरशिप हैपेंड, द पर्सन गॉट क्योर्ड, हैप्पी, द फैमिली इज इंटैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटस इज इंटैक्ट। सेकंड एग्जांपल में ट्रीटमेंट तो हुई, आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंसेस चले गए, बहुत दर दर की ठोकरें खाए, फैमिली टूटने पे आई थी, एंड फाइनली दे हैव सोल्ड देयर हाउस, नथिंग इज अवेलेबल, स्कीम्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। सो जो हमारा डालमा जो एक डिश है यहाँ पे, वहाँ करने के लिए सारे वेजिटेबल्स लगते हैं, दाल लगती है, हल्दी लगती है, सारी चीज़ पॉटपोरी हमारे इंडिया, हमारे भारत देश में उपलब्ध है। बट जब सारी ट्रीटमेंट इकट्ठी आती है तीनों पार्टनरशिप के जरिए, वैसे ही वेजिटेबल्स, हल्दी, दाल प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, वो जो डालमा होता है बढ़िया होता है। वेयर एज थोड़ा मिस्टेक हो गया, the partnership is not working well, everything is available, that dalma dish will not happen well. So what I say, integrity and the reliability of the initial testing is important. Whenever initial advice is given, the right ASHA worker or the right doctor or the right RMP, whichever is AYUSH doctor available, the advice has to go, and then all the other sections need to work together. In our India, we are always crying कि हमारे पास 3,60,000 और 36 लाख बेड्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। जो उपलब्ध है उसमें ट्रीटमेंट करिए, तीनों पार्टनरशिप इकट्ठा लाइए, सारी चीज़ उपलब्ध है, फ़ायदा लीजिए, एंड सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। और लास्ट कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मतलब यही है कि सर्व प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका भला हो, किसी को कोई दुख न रहे। ओम शांति शांति शांति। ये पॉसिबल कब है? व्हेन इंटीग्रिटी, कंपिटेंस, कवरेज इज देयर ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड फैमिली पार्टनरशिप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर आराध्य, बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया हेल्थ केयर फॉर ऑल को। अभी मैं अनुरोध करी डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र, क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र होचंदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर। Namaskar, Professor Mahapatra and all eminent dignitaries on the dais, senior doctors, media personnel and ladies and gentlemen of the dais. We are right now, we have been, all through the day we have talked a lot about the unequal distribution of healthcare facilities. We have iconic figures like Dr. Ramchandani and Dr. Hota who have set a benchmark in taking healthcare to the most deprived.
there is no doubt that there are n number of very eminent doctors from Odisha and from India who have set a very high level of care and who are at the cutting edge of technology in healthcare. And we are now going for this healthcare for all concept according to the SDG goals. So with all these things happening, myself being a full-time administrator, I am a MD Hospital Administration from AIMS New Delhi. I face a different aspect of healthcare in my profession. So when we talk about quality and patient safety, there is a lot to be done. There is a lot of different aspects. So when we talk about quality, if you go by the statistics from various literature, it is said that 1 in every 10 person is having harm from healthcare, and this is in the US. And around, if 100 people are treated, 10 among them in the developed countries and 7 among them in the developing countries develop a hospital-acquired infection. And aircraft travel is not new to any one of us, and there is a 1 in 10 lakh chance that you will have an accident while you are traveling by aircraft. But the literature says that there is 1 in 300 chance that you are likely to have some kind of harm while having a treatment in a hospital. So quality and patient safety is an important aspect that we have now to focus on. Yes, there is one aspect of it where we are challenging to make healthcare reach out to the people. There is no doubt that we are at the front edge of technology and the expertise of medical care, but quality and patient safety is something that we really have to look into. The West is already into it. We are now beginning to have various forums. You have NABH, which is known to all of us. If the government has the NQAs for the public hospitals, the Lakshya standards for the Ops Gynae department, you have Kayakalp, which is there in AIMS for the sanitation, other things. So there are various forums which are coming forward, which is bringing in quality and patient safety. And the WHO has made the Global Action Plan on Patient Safety 2021 to 2030. The Government of India has the National Framework on Patient Safety 2018 to 2025. The various policies are being made and various things are in here to bring about patient safety and quality. But coming to the basic question, what exactly do we understand by quality healthcare? So if I would go by the WHO definition of it, quality healthcare basically means it should be evidence-based, it should be safe, and it should be people-centric. These three things is something that we must focus on quality healthcare, and it necessarily does not mean a 5-star hospital. It does not need the various advanced procedures. It should be people-centric, it should be affordable, and I think a lot of work needs to be done in this, and forums like this, and I am lucky that I have been able to share the dais with such eminent personalities and convey this message to such senior doctors here. We should discuss more on this, and a lot of work needs to be done in providing quality health care and ensuring patient safety in hospitals. Thank you. So much, Dr. Siddharth Misra. ଏବେ ଓପନ୍ ସେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି. Yes, sir. There are so many here. Hello. Thank you for the nice deliberations everybody has given. Really, it is worth. My question will be in Odia, and the people, particularly Dr. Mahapatra, can better answer it. आयुष विशेष भाव में आयुर्वेद प्रचार और प्रसार तथा औषधीय वृक्षलता गुल्म संधान गवेषणा और रोपण पाई कृषि उद्यान विभाग जंगल विभाग सह मिलित प्रचेषा हेउछि कि जदि हाँ तार सविशेष विवरणी मु मागिबी. द्वितीय कथा है भारत केते मूल्यर आयुर्वेदिक औषध विदेश को रप्तानी करुच्ची एक पचार उद्देश्य होची आम मैंने जहाँ सब कहूए गोटे है सर्जिकल एवं आउ गोटे है मेडिसिन एंड केयर जो आम कहूए ऑल आर बेस्ड ऑन एलोपैथी बट इंडिया हैज गॉट द हाईएस्ट पोटेंशियलिटी
in case of Ayurveda. And the starting point Dr. Mahapatra has given, and this the gentleman from Patna, Mr. Aradhya, he has also concluded his speech also with Vasudhaiva Kutumbakam and these slokas. So my point is, Ayurveda is the best only answer, and we have to develop that vocal for local. Thank you. I think it's a very important question. If you look at the Veda, Ayurveda is part of Atharva Veda, because we understood that without good quality life, a good quality human being is not possible. So Ayurveda is one of the mother of all medicine. Most of the allopathic medicine has a herbal background, which is a finer product. So we have even the allopathic medicine from the plant product. So there is no question that Ayurveda is refined to some extent to the allopathic medicine. The question is that allopathic medicine are costly, Ayurvedic cheap. Today the confidence of Ayurvedic medicine low, because allopathic medicine give you quick and long term, I think short term use and long term effect. But Ayurvedic medicine is less harmful, it has a less cost, and it may cause cure of the disease which many allopathic medicine may not give. Coming to the export of the medicine, if you go to different country, you will see Ayurvedic shops, whether it is Australia, or England, in many part of the America. Dr. Das is there, he is there, he was in Australia for a long time. Ayurvedic has gone to many countries, but what you expected, there is no medical explosion in Ayurvedic. That is because of our attitude change in India and not patronization by government of India. They have started AYUSH in 2005. It's a complementary medical practices to each other, so that the costly medicine can be less prescribed and people can have a long-term cure by using herbal product. But it requires lot of mindset, attitudinal difference, and also patronization by the medical doctors and government. It's not slogan standing here ki Ayurveda. They should really do the production centers, quality control. What is more important, we all know Tulsi is good for cough and cold. Something in Google is good for this. Maybe Brahmi is good for good memory. But where is it all right that Indian with a background of knowledge of Ayurveda, or from Puran or Shastra or the books, we know that Ayurvedic is very helpful. But other countries they don't know. You have to provide the scientific evidence. Today, to get a scientific evidence, you say whether this was gone through a field trial, phase 1, phase 2, phase 3. You know that COVID vaccine, even knew that COVID vaccine is going to work, it has to go through the phases. So Ayurvedic medicine has not gone through a time-tested process of class 1 medicine. Phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial, and long-term clinical trial with control studies. Half people get this medicine, half people admit. So when you convince the rest of the world Ayurvedic is good, you have to have scientific evidence, which is lacking today. So most of the people, those who use it in India, the conviction, experience, personal communication, rather the scientific evidence based. So if you have to tell the rest of the world take Ayurvedic medicine, then where is the evidence? That's the most important. Sir, एठी जो माने भी एठी अछंती गोटे बड़ प्रश्न आसुची आगे गोटे भल एग्जांपल देबी कि आपण माने सब रामायण को विश्वास करंती. देयर इज ए कांसेप्ट दैट कि रावण आसला कि राम आसला बेलू लंका रू इंडिया आसला बेलू या सीता को नहीं गला से माने गोटे वेहिकल यूज करते जा नाटा होची विमान, पुष्पक विमान. आ से विमान एते बढ़िया थिला कि जोथरे नो फ्यूएल, नो एयरपोर्ट, नो इंजीनियर, जोटी चाहे बस पारिबो. इवन मु सुनथिली जतले राम फेरिले सेते बेले समस्त नहीं 12 बसिक माने 5 लोक बसले अपन देखले रावण चोरी गला बेले ता देखलो 1000 लोक. इट इज आल्सो कैपेबल सेल्फ एक्सपांडिंग. बट प्रोब्लेम कौन है जिते बड़े एरोप्लेन बाहर इंडिया रे फास्ट आसला पुणे 1930 रे ताकू इंग्रेज माने जानिक बसैले से कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पुष्पक. व्हाट सारिसली आम सेम एग्री, इट इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. आमे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूने नहले जो आमे कहूचे आज एलोपैथी मेडिसिन इज ओनली 500 और 5000 इयर्स, व्हेयरएज आयुर्वेदिक मेडिसिन इज एज ओल्ड टेस्टेड मेडिसिन, 3500 ईयर ओल्ड मेडिसिन. बट आमे ताकू प्रॉपर स्टेज सार कहले सेटा नहीं पारुने. सार अच्छंती रिसर्च हेड
सर ऑलरेडी बता कहले मुझे आयुष आम कर सर ए फैटी लिवर यूज तो इंडिया 30% अच्छी आम से हलदी बटर मिल्क आपको देकरी वी आर गिविंग ट्रायल्स मुझे कहि आप CCRS हो मो मैडम अच्छा ICMR मैडम अच्छा शंकर मैम लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल्स आर देयर वी शुड कम अप विथ स्टार्टअप्स व्हिच आर डू द रिसर्च ऑन द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यहीटा कले ही आम से आंसर दे पार एंड डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन आगे जापर एंड वी आर ऑलवेज happy on the health approach, but only thing that we have to know the technology transfer, the process of getting evidences and how to use in the large scale. एटा जब आम कर डेफिनेटली आयुर्वेद मोस्ट लाइकली आगे को भी पड़े जापर एंड सब लोग देखते वेस्टर्न कंट्री आसिक योगा कर नाचुरोपाथी करते योगा डे है होल वर्ल्ड जानीपारे सो नाउ आम यहाँ कर मो सहित अच्छा डॉक्टर दिनेश स्वाई से फैटी लिवर कि योगा करके कम कर he has gone. So these are the things are coming up. I request everyone, some of the jab अच्छी scope of the research facility, they come up and as Acharya sir भी कही already, he is open to help in any way for the research. Please come join hand with him. तो आमे करी परिबा. I think Durgesh also can take a message that everyone should connect to CCRS. Odisha हमर हेपर and Odisha already what is CCRS center अच्छी. Dr. Ashok Pandai दिन थिबे and lot of people are there. तो ऑलरेडी आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये अच्छी आम समस्त मिसल तक करें तो समस्त आसतु आयुर्वेद मेडिसिन भी बहुत भल कि काम कर बट वी नीड माइंड सेट. थैंक यू. सर आपन जो क्वेश्चन टा कहले तार आंसर मुझे दबाक चाहूँगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत किसी इनिशिएटिव से आरी ऊपर नहीं और मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन ऊपर आप जोटा कहते आमर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी होती एवं सी डिफरेंट फंडिंग दौर डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेटा गोटे सब पार्ट सबऑर्डिनेट पार्ट गोटे आउ कल्टिवेशन कंजर्वेशन आउ प्रोपागेशन सबुथि से डिफरेंट स्कीम्स आर देयर एवं ओडिशा रू भी आमर सबुज विप्लवर डॉक्टर मिस्टर साहू अच्छा सी भी तार गोटे मेम्बर अच्छा बर्तमान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से भी आम बहुत किसी आम स्टेट्र बहुत स्कोप अच्छी किंतु लेट्स टेकर अच्छा से पर्पस रे क्वालिटी प्रपोजल गले निश्चय मु तार गोटे मेम्बर भी अच्छी जदि आमर एतिक आश्योर करें जदि क्वालिटी प्रपोजल गला ओडिशा रू फॉर द कल्टिवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आम निश्चय ताकू आगु को दे पारिबु एवं एबे रिसेंटली आम देइचु पाइकमाल कॉलेज को भी देइचु डिफरेंट जति प्रपोजल जाऊँगी तारी उपर आम काम करूँ. आउ सेकेंड क्वेश्चन आपण जो गोटे है एक्सपोर्ट आउ ये उपर आपण मो प्रेजेंटेशन थिला मु आनीची भी आपण शेयर करदेवी. गवर्नमेंट ऑफ लास्ट कोविड टाइम रे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट CII सहित आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे कर सर्वे ए 16 टाइम बढ़ी जाइए जोटा कि लास्ट हो नाला आ सबुठु बड़ हूँ राजाश्रय आपणकर जदि गवर्नमेंट सपोर्ट गवर्नमेंटर स्कीम ऊपर को आसो देन ओनली आयु जोटा कि लास्ट बहुत दिन है नाला किंतु एते फोकस वे रे नाला किंतु बर्तमान प्रेजेंट गवर्नमेंट ताको नौची ने फोकस वे आउ डिफरेंट स्कीम्स आसी बहुत स्कीम अच्छी तेणु भल टेकर आसिले क्वालिटी प्रपोजल सबुठु बड़ जिनस हूँ क्वालिटी प्रपोजल्स बिकज कहीं पर्सनाली दे पारे क्वालिटी ग्रुप ऑफ पीपल बसुंच जो थे कि आम मैक्सिमम प्रोजेक्ट रे एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी नेशनल रिसर्च कंसोर्टियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग प्रेजेंटेशन रे कहि पारली नेशनल रिसर्च कंसोर्टियम करिया जाउची जोटी कि DST DBT आउ अदर CSIR ऑर्गेनाइजेशन मानक सहित गोटे 100 करोड़ गोटे वर्ष रे खर्च करिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहूची तेणु सो नाउ कोलैबोरेटिव रिसर्च पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्कोप बढ़ी जाइए आयुष सेक्टर पर्टिकुलरली क्यों प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग मच एम्फासिस ऑन दिस पार्ट एंड योगा डे जो अशोक बाबू कहले योगा डे जमी बर्तमान ए वर्ष नियर अबाउट 25 मिनिस्ट्री आयुर्वेद डे इनवल्व हेले जोटा कि मैक्सिमम वे रे सेटा प्रोपागेट हो पारा तेणु फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छी ये इंटीग्रेटिव मो मैडम डायरेक्टर अच्छा ICMR सहित भी कथा होची आज 3टा बेले गोटे MOU अच्छी आमर एम्स न्यू दिल्ली सहित 2टा प्रोजेक्ट आम स्टार्ट करूँ सहित एम्स सॉरी भुवनेश्वर सहित एम्स न्यू दिल्ली सहित तो ऑलरेडी आम 4-5टा प्रोजेक्ट चलुची काम महापात्र बाबू थे भी Thank you. Acha, I will ask a simple question. Your son gets MBBS and Ayurvedic medical. Where to send it? Please, honest. Let us think how much we like our son to be the. You are not answering my question. Your son gets Kota Medical College, Puri Ayurvedic College. No, sir. What will you do? Sir, I am want not to. telling what happened 50 years back when there are no medical colleges. Sir, today there are 21 I want to medical. draw one question from Alok Srivastav sir. Only small question. He was talking regarding medical tourism.
medical tourism, this is tourism in India. It mostly, suppose you are going for allopathy, the surgery particularly, then from the poor countries, my point is, from the poor countries, people will affordable price and India, they will come to India for surgery. My question is, for the high-end tourists, those who can afford more, we have got potentiality, particularly Panchakarma and other things also, particularly the Ayurvedic massage and other things. We can also propagate to that one. This is the medical tourism can further be enhanced. Even after surgery by allopathy medicine, for the this is the another course we can take up with the help of Ayurveda, Siddha and other things also, even yoga, and they will be completely cured and they can return their own countries with a lot of satisfaction. So my point is, medical tourism once we are talking of, we must be concentrating more on Ayurveda and allied things. Thank you, sir. I just ask you one thing. I think a lot of people from Gulf, those are rich people, come to Kerala for Ayurvedic treatment. It's not that poor people come for cheap treatment. That's second thing. I every day take for last 25 years haldi, mahu or lembu. When I come, a brain tumor patient comes, any patient comes in stroke, I tell take haldi, mahu, lembu. The patient asks me, you are a homeopathy doctor, Ayurvedic doctor, or allopathy doctor. The question is that you have to change your mindset, my dear. You are heavily loaded for brain surgery than the Brahmi tablet. If I tell you improve your memory, Brahmi tablet will take it? No. So question is very rightly put. My point is that since we drive allopathic system, I have focused on those aspects in scope. But if you look at the terrain of Odisha, it's rightly said that it's best undiscovered secret. And the kind of terrain we have, and if you compare ourselves with Kerala, which has dominance of Ayurvedic treatment, and a lot of people from abroad come to the country, we can similarly develop a well-established model of wellness in Odisha. Definitely there is a huge scope, and the people of Odisha, with the talent base we have, both in Ayurveda as well as in allopathy, can support both the things to emerge Odisha as a favoring destination for medical tourism. Apart from this, infrastructure improvement definitely is required. Why? Because currently the flight connectivity is very important. Most of the people who are coming from abroad for wellness land up directly in Kerala, which is currently not happening in Odisha. We need to change that as well. धन्यवाद डॉक्टर रेमन कुमार मिश्र शुभ अपराह्न समस्तंको टुडे वी आर हियर on Odisha Health Connect. I want to know from panelists, and I want to give thanks to Mr. Sahu for its best effort for that. My question is, what is the aim and objective of Odisha Health Connect? यदि ये गरीब लोगों के लिए है, then what is the best definition of a poor? So I want that answer, please. What is the best definition of a poor? यदि जति ए प्रोग्राम टी आमर गरीब लोक मानक पाई बा तांको सहायक पाई तबे कौन हबो गोटे गरीब लोकर डेफिनेशन? थैंक यू सर. ताको टिके क्लियर करिया पे चाहूसी ता माने जोटा से डॉक्टर को पचारले आमे जो कनेक्ट करूचंती हेल्थ रो कि आमे सो पैनलिस्ट सो इंटेलिजेंट पीपल जस्ट वी आर सिटिंग हियर एंड जस्ट डिस्कसिंग आमे कौन काज करि परिबा जो थरे कि देखुथिबे जेते लिवरेज टेक्नोलॉजी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो हेल्थ केयर फॉर ऑल हो आमे मेडिकल टूरिज्म कथा छाड़ी दियंतु ई सबु जिनिस रे आमे जो गाँ गहली रे गोटे लोक रहुची जो विषय रे जानि आशा हो अंगनवाड़ी हो दे आर बीन attached to other things जो थरे कि कट्स एंड कमीशन एंड ऑल ये गोटे ये डाक्तरटा भल ताकू माने डाइवर्ट करी दे आर टेकिंग टू सम अदर प्लेसेस हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द पुअर फेलो फ्रॉम दिस कमीशन एंड कट्स? But first we should know who is the best poor person and who should be get these opportunities. ये opportunity को पाइबा पई के best ताकू तो first हमें selection करवा उचित. But how we can do this? Who is the best person for that? So, ये सवाल एकदम डायरेक्ट है, आंसर इनडायरेक्ट होगा. देखिए अभी
हमारे if in our family suddenly the urination stops of one of the family members, we are like so learned people, we don't know where to go, whom to talk to. Suddenly we realize that in our family one nurse is there, or one paramedic is there, or one of the driver of one of the doctors is there in our society. Even though I am PhD, whatever, I will talk to him. Arey, kya hua? Kahan jaun? And the process starts. Whatever is known to him or her, the person is recommended. Yesterday only, IAS officer's PA, his family member faced the same problem, the daughter, and they are in the state capital में है, पता नहीं कहाँ जाना है. They are the real poor. Okay. Now, when we create the healthcare for all ecosystem, हमारे भारत देश में सारी चीज़ें उपलब्ध है. वर्तमान में जीना है. वर्तमान में जब जीते हैं तो जो द्वारपाल होता है अंदर जाने के लिए वो तैयार कीजिए. आशा वर्कर, जीविका और पीपल हु आर सेइंग दैट आई विल स्टे इन दिस डिस्ट्रिक्ट, मुझे यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना है, मुझे आगे नहीं जाना है, मैं फैमिली के साथ हूँ, तो वो लोगों से 3-3 घंटे का आप ट्रेनिंग करो स्किल लैब के थ्रू. उनको पूरा एडुकेट न करो NABH स्टैंडर्ड के अनुसार. यू डेवलप देम टू सर्टन लेवल टू कैप्चर द मैकेनिज्म की ये है तो यहाँ जाना है. तो द्वारपाल का काम बराबर होना चाहिए. जो मे आई हेल्प यू डेस्क होता है ना, तो वो रोल होता है आशा वर्कर का, जीविका का. और जो कोई इंसान, रत्नागिरी शहर में छोटा सा गांव है उधर, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त था अंशुमन करके, तो ही नेवर वांटेड टू गो आउट, तो उसको ट्रेन किया है डॉक्टर परकार ने. ही इज नाउ द मोस्ट एलिजिबल और एफिशिएंट द्वारपाल और मे आई हेल्प यू डेस्क. We have to create those may I help you desks across the country. You got Ayushman, you got Swasthya Bharati, you got several Rajiv Gandhi Yojana, this Yojana, that Yojana, 64,000 crores, 1,000 crore given to Odisha. My God, but मेरे family में पेशाब रुक गई, कहाँ जाओ? होता नहीं फैसला. So you require those द्वारपाल्स, and द्वारपाल्स could be public, private or family. I keep on repeating the topic given to me, even though it's a beloved topic. मेरा PhD उसमें ही हुआ है. तो आपके पास सारी योजनाएं हैं, वर्तमान में जियो, मेडिकल टूरिज्म, ये वो सारी चीज़ें होती रहेगी हमारा रेवेन्यू ऊपर करने के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए. बट हेल्थ केयर फॉर ऑल मीन्स एवरीवन हैज टू स्टैंड एंड वी हैव टू क्रिएट दोज मैकेनिज्म्स ऑफ द्वारपाल एंड मे आई हेल्प यू डेस्क, नॉट मे बी फुल्ली क्वालिफाइड, स्किल लैब्स एंड ऑल आउट. Okay, so I have given a bugle to your question, but said whatever I wanted to say in a very vehement manner. Thank you. Thank you. आपन जो फास्ट सब्जेक्ट थिला एटा हमें प्रकाश भाई आ मु हम बसी डिस्कशन काफी टाइम करथिलो कि हाउ टू गो फॉर दिस इज जस्ट ए ओपनिंग सेशन. यू कैन सी द ईच टॉपिक इज परफेक्टली डिजाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल भाबंतु कि ओडिसा रे हेल्थ नीड कोन अछि, हाउ इट इज यूजिंग. प्रोफेसर असंभव आखि करबेन बिकॉज एम्स अपन सब देखछथि एते पेशेंट एते लंबा वेटिंग, हाउ एंड वेयर इज द प्रॉब्लम, ही इज द बेस्ट पर्सन टू सॉर्ट आउट. ऐसे आपन को एबे गाइड भी करि परिबे. देन सेकंड देखंतु डिजिटल हेल्थ जोडा मु कहली, डिजिटल हेल्थ एते जिनिस जे हम समस्त जानि छै से के यूज करने. एबे जने मोबाइल स्टार्टअप आस्तिला, ही इज फ्रॉम USA, बट से इंडिया से अशोक आम गोटे करवा एमती काम. द आप ऑलरेडी आमर से गोटे ओडिया पिलाटे अच्छी दिल्ली में बोली होची, बहुत ओडिया लोक बट करछन्ती, से एबे करछन्ती हेल्थ ऐप, जोथि कि आपनकर पॉपअप्स आसीबो कि डॉक्टर अशोक इट इज नाउ टाइम टू स्टैंड अप, ये अशोक आपनकर शुगर टेस्ट होतला मंथली, सो यू हैव टू फीड द पैरामीटर्स, यू विल गेट द अलर्ट्स. तो ये सब जिनिस जो आसुची टेक्नोलॉजी याको पूरा फुली गोटे टेक्नोलॉजी सेशंस हबो आगो को. देन थर्ड हैला कि आप तो टेक्नोलॉजी कले जोटा विजय बोले बेस्ट वन ऑफ द पर्सन, ही इज लिस्टेड इन द 100 टॉप पेटेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री. तो आपण कला पर ताको केमिति करिवे कि योर कॉपीराइट हैज बीन प्रोटेक्टेड, आपण कले कोड गवर्नमेंट सिस्टम पाई परिबे. जे हमर एटी अछंती डॉक्टर बडमाली से करछन गोटे सीपीआर माने आपण भाबंतु हार्ट को दबेया को पड़िबो, जोटा काफी लोक जानि नांती. आ गोटे मूवी देखते गोटे मिनिस्टर थिला, से तांगले कोन कि तांकु से लोकडे झियोडे तांकु सीपीआर गले मुंह फुकी देला, घर आसला पर तांकर वाइफ तांकु बोल झगड़ा कले. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. हम भाबु जे करिबानी इनिस से गोटे मशीन कले जस्ट फिट हिम पुट द प्रोग्राम कि 20:1 रेशियो हबार से सीपीआर कर. तो यही सब आम होमग्राम है आम यही मानक नहीं आम कर हाउ हेल्थ स्टार्टअप, हेल्थ टेक्नोलॉजी, पेटेंट, बिजनेस एंड कमर्शियल हो पार. ही इज द बेस्ट पर्सन. आगू आवर सेशन है जापर. तापर जोड़ा कहले मेडिकल टूरिज्म, जोड़ा कहले मेडिकल टूरिज्म ओडिशा को तो आसला मैक्सिमम नियर बाय स्टेट अच्छी, बट वी कैन थिंक ऑफ होल ग्लोबल. आ सबुठ कहि पूरी बेलाभूमि ओडिशार द कोस्टल लाइन इज द फाइनेस्ट कोस्टल लाइन. मो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने जुहू बीच जाइए से देखले लगे गोटे कौन बीच, जो ओडिशा बीच जाइए मोर पूरी सांगटे गला कहले तो मोर सुसु कर इच्छा हेनी कौन से बीच, बट ओडिशार बीच द फाइनेस्ट बीच
and we have not explored for the tourism. And सेठी आपण योगा करंतु सेठी नेचुरोपैथी करंतु मेडिकल टूरिज्म जो कहउछन दैट विल द एक्सीलेंट स्कोप फॉर एनीवन जोटा के एबे तो अनएक्सप्लोर अछि तापर आपण कहले जदि मैडम अछि संग मैडम शी हैज द रियल डाटा ऑफ ओडिशा ऑन हेल्थ इश्यूज ओवर द टाइम एवरी ईयर वाइज आमे तांको हेल्प नै परिबा कि हाउ कैन बी डन को प्रोसेस करि परिबा आमे आगु सेशंस हे परिबो दिन डॉक्टर मनोज अमर अछि आछिन से कहबे हमरो पेशेंट हेल्थ केयर एंड सेफ्टी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन डॉक्टर चंद्रशेखर ऑलरेडी दुबई रो आछन ही नो द फिलोसफी तो सब ग्रुप रे लोक अछन आमे बर्तन चाहूचे पांचटा जिंस एतिर हला कि हाउ हेल्थ रिलेटेड रूरल हेल्थ आपण आज भापंतु रूरल हेल्थ इंडिया लिव्स इन द विलेजेस आमे जदी रूरल हेल्थ को नबे तर कि पोटेंशियल के जानि नांती आपण भाबंतु गोटे मु आज कहूची मोर जने सांगो ही जे कमिशनर इन अंडमान से सेठी कोन करछ गोटे डॉक्टर सेठी पेशेंट देखि दोची वर्कअप कर दोची देन ही आस also सब डॉक्टर से कनेक्ट कर देन गोटे कार्डियोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड कंसल्टेशन यू कैन सेकंड ओपिनियन क्लिनिक वेयर देयर इज नो मेडिकल वायोलेशन से गोटे डॉक्टर देखि जी इवैल्यूएशन करिछि देन एक्सपर्ट डॉक्टर पचारिला इन पेजेस डॉक्टर पेशेंट तार हिस्ट्री कहूची से डॉक्टर ताको सेठी प्रेजेंटेशन देला एंड एक्सपर्ट डॉक्टर तो गाइड कला दिस इज हाउ यू कैन अचीव द रिमोटेस्ट आपण अंडमान को गां दीपर लोक बसते ताको आपण ट्रीटमेंट दे परिबे तो ए सब जिंस को हम नै परिले तापरे हेल्थ टेक्नोलॉजी आपण भाबंतु जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अछि कोविड बेले केम जणा पेला रेलवे स्टेशन किए कोविड केम जणा बोतला दैट इज इन्फ्रारेड सिकनेस इंडेक्स माने से कोविड रो जो लाइट कैमरा जे से 60 मिनट देखि लोकटार फेसटा अबाइगा लागुची देन रेड अलर्ट दिस मे बी द कोविड ताको संगे लोक पहुंचले तो ए जो जिंस सब हेची आमे या थ्रो रे आगु को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नै परिबा तो गोटे हला हेल्थ टेक्नोलॉजी गोटे हला आउ तापर हला हमर स्टार्टअप्स केम दे परिबा हेल्थ रेट जोडे ओडिसा बहुत कम अछि हेल्थ टूरिज्म केमि प्रमोशन हो पारिबो वेलनेस रिलेटेड होलिस्टिक हेल्थ सेटा केमि करि परिबा ए सब जिंस फेज वाइज आमे करि करी आप जो आसीबा बट प्रोवाइडेड समस्त मिसी करियर अछि इज नॉट द ऑर्गस इट इज द एवरीवनस इनपुट एंड बीइंग कंबाइंड हैंड एटा द ऑब्जेक्टिव धन्यवाद Actually, we are not health concerned. I have done health camp for the young people, middle order people and old people. So everybody has health problem. If you do the health camp below 20 years, 15% are pre-diabetic, 15% are blood pressure high and 50% depressed. Go to AIMS Bhubaneswar. We did a beautiful study. We did not publish it. It's a demoralizing. We took 550 nursing and MBA student. उससे 40% का ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन था 2017-18 years. When they being 25, they will high blood pressure, they will never get check-up, and by 40 years, they will have heart problem and brain problem. So we are not doing health check-up. Preventive health check-up from age of 20, I am not telling you are 40, 20. Today your life is stressful. From the entrance exam for MBBS, engineering, management, your children are put to stress at 10 years of age, right? So you are stressed. We are not doing preventive checkup. We think बच्चा है कुछ नहीं करना है तो you should get a preventive checkup. None of us do cardiac checkup every 6 monthly. Who does after 35 years? We say America the people are 45, 50, but India people are coming with heart attack 35. So our age is 20 years earlier. How many of you tell me honestly? How many of you get 6 monthly blood sugar, ECG, TMT test? You do not. So we do not believe in preventive health care. Now come to Government of India. Government of India has AYUSH. And when our aim started 2003, the first thing we told the government, we should have a AYUSH. The AYUSH building and none of the aims is used. None of the aims I properly use. Sometimes the doctor, I got in my next room in OPD Bhubaneswar, I used to sit 6 days. Next room was Ayurvedic doctor, left side, right side homeopathic doctor. No patient went there. When I finished 30 patients, I went to get Ayurvedic. How many? Sir, koi nahi aaya. Government started AYUSH building. MRA laga hua hai. I started AYUSH clinic. Next to my room is Ayurvedic and homeopathic doctor. When I say for your joint pain, go to Ayurvedic. At the end of the OPD, somebody come with backache, joint pain, arthritis. I asked, this fellow came, he said, I don't want Ayurvedic treatment. Can you believe? When I am sending somebody for Ayurvedic treatment for the arthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, he said, I will go for knee replacement. Because he has been so much loaded with allopathy. Again I am telling, our mind is loaded with allopathic side. So even I prescribe you homeopathy, Ayurvedic, you will not take it. Yesterday I went to a homeopathy college. Every month I give 2 lectures. One in homeopathy college for good health. Another, these are faculty on Ayurvedic and homeopathic medicine. There I talk about Indian integrated medicine and role of AYUSH. If I talk to medical doctor, they will hear it.
Do you believe they are going to hit? When I go to Ayurvedic, they hear it for 2 hours. They say for 5 to 7 kar dijiye sir, but I have to come back. But if same thing I say, role of Ayurvedic to allopathic doctors, how many of our allopathic doctors will take Ayurvedic medicine? यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ऐसी बात है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई ज्ञान है। अरे वो पिच उधर के लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट के लिए है ही नहीं। आयुर्वेदिक एंड आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक विल हैव टू बी प्रैक्टिस एट द फैमिली लेवल। वी हैव टू प्रैक्टिस एट द फैमिली लेवल। वो जो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशन है कि घर में ही वो सारी दवाएं उपलब्ध होती थी। जो नानी होती है, नानी बताती थी ओके तुझे ये हो गया हल्दी ले लो, वो हो गया ये ले लो, वो ले लो। सो यू डोंट गो टू द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट गया तो जाइए ना आप एलोपैथी के पास, बट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जाने से पहले घर घर में आयुर्वेदिक एलोपैथिक पब्लिसाइज करो। वो स्किल सेट जो नानी के स्किल सेट थे वो स्टैंडर्डाइज करो स्किल लैब के थ्रू, अंडर आयुष के थ्रू या किसी के थ्रू, एंड ट्रेन करो। हमारे उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट्स है। मैं यहाँ बैठ के 1 लाख कंट्रीब्यूट करके 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकता हूँ। मेरे से शुरुआत हो सकती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए इन लोग का हेल्प ले लूँगा मैं, बट जो स्किल सेट नानी के स्किल सेट करने हैं मैं 10 नानी को लेके जाके ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग कर लूँगा। सो वी स्टार्ट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक at skill level at home and treatment at allopathic level at the hospitals. Sir, last question, can I put? Yeah. Here my, I'll come to you, sir. Today India is facing one of the biggest challenges, technology. And we all are great research worker, knowledge worker, doctor, but you have the idea. And if it is your innovative idea and there is a demand in the market, why you are not taking that idea into a product? That is one of the challenges in Odisha, and being a Odia, I will say, our academics collaboration with industry is very poor. Skill is not going and skill is not up to that, and that's also part of what we are discussing in a socio-economic context. The biggest challenge today for a father or for a family, because I came from a remote place of Kalahandi district, I have seen the gap. When I went to Delhi for my higher education and went also all to other country, then we have completely divided. So when we are talking about health technology, particularly health technology, we must not confine to the sector. We have Ayurvedic, the Director General sitting himself here. No one was talking about AYUSH 64. But when there was a challenge, we transfer and commercialize, I think, more than 28 AYUSH 64 to 40 to many of the industries. And that industry give livelihood to the common people. At my village, if you talked about hi-fi patented medicine, they may not be able to access. But my father, without going hospital, he managed, because I have. So point we wanted to bring that how we can take that technology in affordability, accessibility and adaptability. That is the challenge today. And India dependency on import of technology is very high. Syringe to CT scan, we all are importing. But are we creating livelihood for that? Do you have any ecosystem for creating such kind of opportunity, bringing technology to the market, giving livelihood to the common people at grassroots? And that's the work what we are planning and already created an ecosystem. Seeing is believing. I'll urge you and request you, come to Visakhapatnam. I think more than 30-40% people from southern Odisha depend on Visakhapatnam medical, not only medical, in other, it has become a medical tourism hub. Many of the Odia doctors are there because they have created momentum, ecosystem, accessibility, adaptability, affordability to the people of southern Odisha. Even my mother, मुझे बेटा भुवनेश्वर नहीं जाना है, तेरे पास ही आना है, तू कोई भी डॉक्टर को दिखा दो. Point is that is for a woman at miles looking for such kind of opportunity. That's the health connect. We have to connect the dot and we need to identify the dots, and that is very, very important, and that's the objective of Odisha Health Connect. We need to collaborate, co-create and cooperate.
then only we can make the difference. Thank you. डिस्कशन थिला एवं जो माने पैनल ले थिले सनकु बहुत बहुत धन्यवाद ताका बहुमूल्य समय रो आसिले एवं एठी शामिल हेले एवं तांकर वक्तव्य रखिले. I have got a small question. Yes. I am Dr. Devadarshi, urologist. My father is also a doctor. So the day are passing by, we are having a shortage of skilled personnel. Previously, the undergraduate people, undergraduate only MBBS, plain MBBS, was able to do any kind of surgeries. Now, you are urologist. After getting a MBBS degree, we are struggling to get a seat in MS. In MS, after passing MS, after the 3 years, just like a traffic police is MBBS doctor. When a patient comes for a CTBS, you ask the patient to go to CTBS. For a GI surgery, ask the patient to go to for GI surgeon. Urologist, ask the patient to go to urologist. In this fashion, when we are also urologist, after 4-5 years of struggle, maybe 10 years of struggle, I am another last 12 years I am in practice. So 4 to 5 years, we are kind of a traffic police only. You need to say, say transplant I don't do, and that needs a lot of ethical committee and all. So you have to go to this hospital, these doctors. The same thing that happens also with the paramedics. What we should ensure is about the quality of treatment. At the same time, should increase the quality of the treating personals. So what the thing we should do to bridge between this gap? Just I need to know this answer. Actually, various state governments, they have started certain skill labs in the healthcare area. They point out, like the neighboring state Bihar, I have seen myself, there are 25 programs developed. There's a whole lot of department and building assigned, and they identify every skill set gap and they create a program around it. There are 6-member IAS team members there, led by Pratyay Amrutji, and uske under around 25 experienced people. Some of them are doctors, some of them are nursing superintendents retired, and they create small skill sets, and government ensures that whoever undergoes that training, they give some kind of job or role. So maybe that could be one of the answers, and this is happening very continuously. So in your area also, some kind of little more deep dive is required, picking up the brains from experts like you, and we create some mechanism of supporting and creating the support ecosystem. ये ज़रूरत लगेगी, सब जगह लगेगी, in your area as well as in districts and everywhere else. Hope I am trying to answer that question. I can say it is the family medicine. In India, we are not promoting the primary health care. You go to USA, if you are suffering from heart attack, you cannot go to a cardiologist without being seen by a primary care physician. Which we are lacking here. So gradually, लोगों को ऐसे हुआ headache, neurology. So these are the problems of education system. हम MBBS only रट्टा मारो, exam दो, PG निकालो. Then PG time just focus थोड़ा सा कर लो कि मेरे को superficial करना है. That is our education. I think Sir is the pioneer in that. We have to think of our medical education. Medical education is not helping to produce a completely wholesome doctor in India. That is the biggest problem. Correct. And that is expected in future. मेरे को भी किसी time में मेरा डर लगेगा because आपको headache हुआ, if you go to a neurologist, you will see the neurological cause. If you go to eye, you will see the eye. But with the problem may be somewhere else sinus, ENT. So we are always having a tubular vision. So what I mean to say is, can we have some kind of test in each and every level for another 5 years? Every 5 years, the guy has to pass that test, skill test, so that can go up to the next level. That's what. What you are telling, time to time assessment of a person, his upgrade of knowledge, skill development, and upgradation of the technology. This should have happened. But we don't have that. What will happen? Somebody has not upgraded, you will throw him out. India require 18 lakhs doctor. I didn't want to tell you all these things. We have produced last 75 years 7 lakh doctors. And we are, let me tell you, go to the internet, what is the need and what is the medical profession suffering today. So we are suffering for their 5 doctors
you are managing one medical doctor in a primary health center. Go to the 50%. I was in UP for 4 years. Out of 4,300 PSC, only 1,000 PSC there is a doctor. The rest of the 3,000 odd PSCs were managed by pharmacists. So when you are talking that skill is that, we talk only quality. When I am fasting, don't talk me about 5-star hotel. I believe in quality. I propagate quality. But fast survival, then quality. If you look at the number of doctors you have produced, today why you are suffering? This is because India never produced huge number. We have 1.5 million engineers. Today we are only taking, after struggling. When I was MCI chairman of the postgraduate committee, we are taking 10,000 postgraduate students. I told them make it 40,000. It's not about the numbers. It is not that. Question is that, let us go back to other side. We are overpopulated country, we are not about the numbers. If I produce a family doctor, family medicine doctor, some centers in India has got MD family medicine. The seats are vacant. Do you know how many seats are vacant in AIMS? I know every data, sir. No, data. It's all about the upgradation of the people. Question is that this all look like that. You have seats, people don't come. People have their own choice. And you cannot force somebody to go. This year, across the 23 AIMS, 300 postgraduate seats are vacant. 8 lakh people appear for AIMS entrance, but because why? Their choice of subject. You cannot force me to anatomy, physiology or gynecology. I am a surgeon. So question is that what you think, what I think, what the administrator think. Can you believe in India when the people are not getting MBBS or MD seats? Large number of seats have gone vacant in MD, MS. I am not talking MD, general medicine or MS. If you take about 43,000 postgraduate seats today, only MBBS seats is 83,000. 2022 MBBS seats are 83,000. Postgraduate seats. My question was how to upgrade them. That's it. Upgrade. These data are available in Google. We started how to upgrade and upgrade. Let me tell you. We started a program at Sanjay Gandhi. I don't know how many know. I was in Sanjay Gandhi. I started every 5 years. Doctors should cover training for 6 weeks. When I went to health secretary, said, Doctor Sahab, we do not have doctors to come a luxury for the update course every 5 years for 6 weeks. He said, Doctor, if you can give us 7 days, because I was in Sanjay Gandhi 2006, most of the doctors did not know how to run computer. So we had a very computer program, updating program, digital medicine program, many programs. So health secretary say, if you want all doctors to be updated, where do I get doctor? I have deficient by 2,500 doctor. You are telling send doctor for 6 weeks training. Okay. So your question is time frame upgradation of knowledge and skill. Okay. Sir, last question. Mo Dr. Aravind Mahanti, शिशु रोग विशेषज्ञ मु गोटे जिनस कहूँ गोटे लोक आम ओडिशार से बस्ती हो बा गाँ गंडारू हो बा माल अंचल हो जिते आसूची प्रथमे से तार जनता हॉस्पिटल माने पीएचसी को जाऊँगी जदि अधिका पैसा अच्छी से सेंट्रल हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स को जाऊँगी नहले जदि तार पाखरे जो विजु स्वास्थ्य योजना हो कि अन्य स्वास्थ्य योजना हो बा हेल्थ इंश्योरेंस हो ताहले से जाई परछि जे गोटे बड़ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बा ये हॉस्पिटल को जीवापाई किंतु कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जीवापाई किंतु सेठी की जीवा कहले पॉकेट रे पैसा दरकार जो पैसा टी केवल देई दोछि जदि लांच देउछि माने हेल्थ इंश्योरेंस दोछि बा लांच दोछि केंद्रीय स्वास्थ्य योजना दोछि बा लांच दोछि विजु स्वास्थ्य योजना दोछि ताहले से गोटे सक्षम होछि गोटे स्वास्थ्य योजना पाइबा पई किंतु छोट छोट जिनिस जोटा कि हमर छुआ मानक पई आ दिव्यांग मानक पई जोटा कि गाँ गंडार माल अंचल कि बस्ती अंचल कि टाउन अंचल लोक छुआ पाई पारुना छोटिया छोटिया जिनिस छुआ जन्म है कि सांगे सांगे जाई अध घंटा भितर माँ क्षीर खोईबा दरकार सेटा कोनोसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल होनी कोनोसी प्राइवेट हॉस्पिटल होनी कोनोसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल होनी ताकू सांगे सांगे डबा क्षीर दिया जाउछि जोठी कि आईएमएस मना करिछि डबा क्षीर दबनी कि बोतल दबनी ये जिनस छोटिया जिनिस पई कोनोसी जगह उद्यम करा जाउ नाही एक दुई दिव्यांग छुआ मानक पई से माने पूरा अछुआ ही रही जाउछंती तांको केही देखु नांती जदिओ सरकार विभिन्न स्वास्थ्य योजना अच्छी चिन्हट करने दुखर जिनस 75 वर्ष पर दिव्यांग छुआ मैंने जना जाऊना थईथान होनी कि कौन स्वास्थ्य योजना पहुँची पारना
तेणु ये जगार आपण मानक मु पचारि जो लोक पकेट्रे पैसा नाही से खाइबा को पाऊ नहीं से औषध किणव केमती जदि जीव 300 लोकों पछरे छिड़ा है धाड़ी बांधी जनता हॉस्पिटल चिकित्सा पाइब केमती केंद्रीय स्वास्थ्य एम्स को गले धाड़ी बांधिकी रही बाहर मशारी टांगिकी शोब एवं सेठू तलू सकाळू आसिक आउटर टिकेट करिवो केमती ना जो लांच नहीं विभिन्न जगार स्वास्थ्य योजनारू सेठी चिकित्सा सुविधा पाइबो से जगह हमें कोन कोन सुविधा रियलिटी थिला जो सर कहउछन ओके सर तो बहुत वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ सर को काफी एक्सपीरियंस भी अच्छी रियलिटी lot of poor people come to me in some hospital now. I say, why don't you go to AIMS? Sir, मैं 3 घंटा खड़ा नहीं हो सकता. If a person who has no money cannot stand for 3 hours, do you think it is justified? He has no money in the pocket and he says, I cannot stand for queue. Government has made the hospital. If a good hospital, there are more patients, there is more queue. When I was a MS student, 45-year MCA student, neurosurgery training, late 70s, the waiting list was 3 months and we are operating 500 operation. In 85, we are operating 1500 operation, 6 months waiting list. And 2017 when I left, we are doing 7,000 neurosurgery operation and 4 years waiting list. So where is the things have gone wrong? More you do, more is the demand, long is the queue. Okay, Is not correct? आउरी नेक्स्ट सेशन अच्छी गोटे क्वेश्चन आंसर से भी करिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अशोक महापात्र डॉक्टर अशोक चौधरी डॉक्टर विजय कुमार साहू लास्ट क्वेश्चन सर समस्त को प्रणाम myself Dr. Anima Parida from physiotherapy background, so I don't know anybody from my background is present over here or not. Sir, I just want to ask, so how can you see what is the reality of means how can we connect in our profession with AYUSH and so that we can do better, means we can upgrade. So what is the reality of India? What is the reality of our profession in India, sir? How can we? Occupational physiotherapy. Yes, sir. Yes, sir. See, we have a center for physiotherapy rehabilitation every AIMS. Today we have got 29 AIMS and each AIMS has got a physiotherapy and occupation center. Exactly. But if you send the person to go there and stand and queue for physiotherapy, they won't go and stand. What the people are doing, paralysis patients say, okay, we cannot come by taxi, we cannot stand and queue. I can call a physiotherapist who will take 250 rupees and come every day. This is what is happening. What did I say? The facility exists, a person doesn't want to take it, he blames the system, it's a circle. So that is how you go to somebody's house and treat people for half an hour, take 250 rupees. Because it is a blessing for the practice in physiotherapists, people don't stand in the queue in the government hospital. Go to Oltapur. Sir, Oltapur is already 55 years old. It started somewhere 71 or 72. I know the project. 6 Oltapur like thing, Center for Excellent Rehabilitation Center was created. But people will not go there because they have long queue. Yes, sir. Sir, I know that. I know you may be a doctor because you are talking physiotherapy. Very few people talk about physiotherapy. Unless you have that background of knowledge, you will not ask question to us. Yes, sir. Sir, actually, it was previously we are working in rehab setup like ortho and neuro. But the things are going on. We are working in gynec setup, and now I am working as where Hobin Baba Cancer Hospital, Varanasi. So, but from my personal level, and what can we do? Suppose big thing, government setup, projects. So that is not in our control. So that is what you are telling lacking, because she is working for SATI also. She virtually connected from Banaras. His 2 friends are coming to SATI also. But believe only 1 or 2 people we can get. She wasted for us, she wait. So that is the, we are giving free physiotherapy service, people still not coming. That is what the primary thing, people don't know, awareness is not there, and we are not able to and think how that. can we improve, sir? That is how mass like this today. Actually people think सस्ता मेडिसिन से अच्छा नहीं होता है. यानी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन होउची बढ़िया प्रश्न भी आछी ट्रीटमेंट बैड ट्रीटमेंट सर मु बर्तन अनुरोध करी अर्गस रा सीईओ श्री प्रकाश साहू को से आसीबे एवं समर्थित करिवे जो माने अछंती हमर अतिथि माने जो माने तांकर बहुमूल्य समय देकी तांकर मतामत रखिले एवं धन्यवाद देवी दर्शक को जो माने बहुत बढ़िया प्रश्न भी कले एवं तार आंसर भी बहुत हुए मिलथियो बोली मु आशा करूची. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रथमे प्रोफेसर अशोक महापात्र वाइस चांसलर सोआ यूनिवर्सिटी फॉर्मर डायरेक्टर एम्स भुवनेश्वर.
Dr. Ashok Chaudhary, Senior Consultant and Head Department of Hepatology and Liver Transplant. Dr. Vijay Kumar Sahu, Senior Regional Director, NRDC, Ministry of S&T, Government of India. Dr. Alok Srivastav, COO and DMS, Apollo Hospital, Bhubaneswar. Dr. Suhas Vashant Aradhe, Regional Director, Paras Healthcare. And Dr. Siddharth Misra, Medical Superintendent, Amri Hospital, Bhubaneswar. बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को ये अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सेकेंड सेशन किस मध्य थर्ड सेशन आरंभ करूँ मो सहयोगी अर्गस एसोसिएट एडिटर शांति भूषण मिश्र कार्यक्रम परिचालना करेंगे। जो कार्यक्रम में टाइटल स्पॉन्सर अच्छा शिक्षा और अनुसंधान नॉलेज पार्टनर साथी स्पेशल पार्टनर आमरी हॉस्पिटल एसोसिएट स्पॉन्सर पारस हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल्स कलिंग हॉस्पिटल लिमिटेड विकास हॉस्पिटल्स यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मेट्रो ग्रुप हॉस्पिटल आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड सेशन खूब शीघ्र आरंभ हम आप एमती पार्टिसिपेट करूँ और भल भल क्वेश्चन पचारतु बढ़िया एक्सपर्ट पैनलिस्ट एवं रही सहित आप इंटराक्शन करेंगे ओपन डिबेट हम ओपन डिस्कशन हम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। Argus. It is the real voice of Odisha, a commitment to excellence, a name that stands for people's first point of view and the truth. सचिवालय सीएम कठारु ओडिशा रो पुरपल्ली रे अपांत अंचल रे थिबा कॉमन मैन रो सीएम रो कथा को आमे सेति की गुरुत्वर सहित देखेबा पई आमे बद्धपरिकर। Driven to be the most responsible and responsive force, it is acknowledged for its progressive and dynamic presence. It is known to be fast and to have in-depth and expansive coverage from every corner of Odisha. It has the most exhaustive and analytical presentation on diverse subjects such as politics, business, sport, art and culture, science and technology, world affairs and more. It has state-of-the-art technology such as real-time 3D graphics, sports analysis and asset management tools. Virtual reality offers unlimited possibilities for the creation of complex, interactive 3D virtual sets. Teleporting and augmented reality make it the most technologically advanced news channel in Odisha. Argus has highly modern newsrooms and studios. The team at Argus is made up of over 200 professionals comprising journalists, reporters, technicians and others. Argus stands for people and their core issues. आमे लड़ीबू साधारण ओडियांक न्यायर लड़ी किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु किंतु आमे कहिबू रोक ठोक काहाकू पचारिबे प्रश्न किए देव उत्तर आपण प्रश्नर 42 मंच प्रश्नकाल आमे आसीबू आपणक सह मिसिबू आउ जवाब मागिबू जवाब
ओडियाଙ୍କ ହାତରେ ପଥର ଏଠି ଜୀବନ ପାଏ ସୁତାକ୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯାଏ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ Today, it is the most preferred and the fastest growing news channel in Odisha. I wish you all the very best, and you will definitely make a big difference to the Oriya society, Oriya people, Oriya language. Jai Utkala Janani and Jai. नमस्कार एबे आमे थर्ड सेशन स्टार्ट करिबा थर्ड सेशन जो टॉपिक अछि हेल्थ सेक्टर स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड एथिरे जो माने हम सहित अतिथि भाव में जोग देबे मु सेमान को मंच पर डाकिया पई चाहूची प्रथमे डॉक्टर एसके दास फ्रॉम अमेरिका चेयरमैन कहूँ जोड़ा जिनस जहाँ शुणिली ता भितर आई डोंट लाइक टू टेक पार्टिसिपेशन दिस टॉक्स वेरी गुड टॉक्स आई हार्ड लेट अस बी रियलिस्टिक मो घर एठी आउ नाही मु अमेरिकन सिटीजन हो जाइछि मोर चाहूची जड़े बाहर थाई एठी कौन करि पारिबो पैसा कथा पड़ुची पैसा लोककर अच्छी पैसा इन्वेस्ट करने कौन हाई कौन टा रिस्क अच्छी कौन अपॉर्चुनिटी अच्छी लुक टू दिस वन बेस्ट एग्जांपल यू सी पर्सन लाइक मी not yesterday long back I wanted to do something for Odisha. Money was not the issue. Surprised to see somebody said, Dr. Das, you can do anything. Well, what? I am not here to open something little. Anything I will do number one. I am the number one probiotic manufacturer, developer, everything I have done as a number one. The sector was zero. The sector was zero, I started. Person like me, not Odia, as an Indian, I was holding the highest job, Food and Drug Director for the state of South Dakota. I discovered something. What is that something? I found probiotic can be a drug. When I saw, in order to do the studies, you have to start studies called phase 1, phase 2, phase 3. phase 1 रे कौन करा जाए माइस मॉडल रे करा जाए phase सही मॉडल रे करा जाए सेकेंड फेज रे यू कैन गो अप टू पीक एंड देन ह्यूमन मॉडल ता भितर जदि गोटे जिनस सक्सेसफुल हला तमे जानि मजे सेटा दैट इज गोइंग टू एक्सेल एंड विल बी गुड प्रोडक्ट आई सॉ probiotic was a drug for pigs, and when I saw it has got the potential to be a drug, what I did, I gave up the job, Director of Food and Drug. Listen, nobody can even think of that one can do. I left the job, started. The awareness was 0%, I could say 5%. 5% लोक whole world रे जानती probiotics. ता भितर मुझे चैलेंज देवी जड़े फॉरेनर हिसाब से पैसा दिस इंडस्ट्री आई एम गोइंग टू गेट इन इट इज ए billion dollar investment is required. I didn't have the money, but I didn't give up. I did not give up. What I did, I started making products for animals because of the vitamin animal can need, human can need. Just get by to survive. I did survive. Then question comes challenge. How I can take it to the next higher level. I did. Higher level means the people, those who are the biggest guys in the world, you must be knowing Dow Chemical. They did not know, Dr. Das, we do not know how to make probiotic culture. I said, I will teach you. You do the manufacturing because I can put a plant. That time plant was going to cost me 10 to 20 million. I didn't have that kind of money. So, what I did, I taught them how to make the culture because they used to make called cheese culture. From cheese culture to how to make probiotic culture. I made and I got a source somebody can do. I didn't have my own.
but I had owned my style called manufacturing. I can do the manufacturing of the product, tablet, capsule, powder, sachet. That I did, then I started growing. Just imagine, I started in the industry. The industry was that time $10 million worldwide. Guess what? Under my leadership, under my research, my venture, I took it to $100 billion sector. $100 billion sector. Nobody has done this. You should be proud, a Odia person. He can do this kind of thing and a challenge. I take challenge. Anything I do, anybody can say, I can have a sector of 100 billion. Anybody? No. Big guys have done, they had money. I didn't have the money. I started from scratch. I did. So I know how to take the challenge and do it. So what I'm trying to say, coming back to Odisha, people try to do this way. Can I have a one manufacturing plant? No. We don't have that venture. We cannot do it. And one of my good relation, and that time, 10 years back, he said, what do you like to do? I said, I like to have a manufacturing plant. Already there, I can fix it, I can show how in the world, what I can do. Just imagine, I had to mention the name I'm not supposed to. Odisha Drug and Chemical. Odisha Drug and Chemical came to me. How? When they told me, I don't like to mention the name, I said, Mausi and Auntie, I think it is, I saw the paper, I can apply. Now what? Like the tender date has been gone. Yeah, I cannot do it. I said, listen, you have chance to do it. But how? Now there is a line said on the bottom, government has got the right to accept or reject any offer. Under that clause you apply, they will consider. I got it. Under that, who was the competition? I'm telling you the name with a due respect. I cannot mention that name. The biggest company of India, challenged me. I said, what I can do? I not only have the manufacturing plant, that plant was manufacturing generic drugs. I said, I am not in that business. I will convert that one to a specific manufacturing product. What is that time? Odisha re chahanti farmer ko jaga ye. Farmer man ko kemiti benefit habo. Mukuli seita dekhe debi. Kon cash crop tangu dekhe debi. Cash crop bane eta sete bele thae tomato. Lycopene. Please hear me. Lycopene means tomato samaste ଚାଷ କରି ଜାଣିଛିନି ଟମାଟୋ କଲେ ଟମାଟୋରୁ ଲାଇକୋପେନ୍ କରି କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଲୋକ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ କିଣିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଗଲାବେଳକୁ ଛାତରୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଅଲକାତରା ଦିସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସୋ ବ୍ୟାଡ୍ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବାଇଂ the product anyway. They can't buy, they are not buying because they in sanitary condition. Shortcut kari koi douchi. When I saw this way, this is not for me. It was approved. I was given this opportunity against the biggest company of India. I respectfully, I retreat. I could not. Okay? Our condition like this. There are many other things are coming out. You will be proud to know. You will be proud to know we can manufacture here. Under Odisha condition, we have to have a called skilled labor. Unless you have a skilled labor, what can we do? I am talking about, let's say, like a IT business started, you know where it started? It started in Minneapolis, but it ended up in California because lack of skilled labor. Odisha re amar challenge kohuchi amar skilled labor darkare, manufacturing plant darkare. Kariya pe absentee owner hisabare mu kari paribeni America re rahikiri. I can do it if I can get the right help. Even now I am capable of guiding people. What I have been doing, Dr. Das, you are an active person. What you are doing now? At IIT Bhubaneswar. At IIT Bhubaneswar, I am manufacturing research stage.
research stage, I am manufacturing second generation probiotics. Second generation probiotic. And you will surprised to see I have 9 patents pending. 9 patents pending. I can do this way. Give me hand, come forward. You can bail the cat. If you can, I can make ISO kit. They have a call incubator center, startup things. I can start 5 companies. I have the money. I can give the money. Money is not the issue. Talent is not the issue. Who is going to bail the cat? Who is going to take the lead? That is, I don't like to accept failure. I accept only success. And please come forward, join me. Join me. At least I should say, during this trip, at least I had 5 new companies I started. And those will be successful. With that, I am concluding my discussion. डॉक्टर एस के दास कहते हैं आम डॉक्टर मनोज कुमार साहू आपन को अनुरोध करुचु लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन ओडिशा से टॉपिक उपरे आपनकर प्रारंभिक अभिभाषण रखिबे। नमस्कार समस्त को लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन ओडिशा आपण माने समस्ते जानिछंती लिवर बहुत इम्पोर्टेंट अंग हमर गोटिए लिवर अच्छे लिवर बिना जीवन संभव नुह ओडिशा रे लिवर डिजीज बहुत बड़ी बड़ी चली तार कारण मेटाबॉलिक डिजीज अल्कोहल वायरल इन्फेक्शन आउती बहुत गुड़ाए कारण अच्छी जिते बड़े लिवर डिजीज बहुत एडवांस स्टेज को आसे लिवर फेलियर बहुत एडवांस स्टेज रे रहे चिकित्सा काम करे ना जीवन बंचेवाई आमको लिवर को चेंज करने पड़े जहाँ को लिवर ट्रांसप्लांटेशन कह जाए कौटू लिवर आणव गोटे हूँ डिजीज डोनर जहाँकर ब्रेन डेड हो जाकर ऑर्गन को आणिक ट्रांसप्लांटेशन कर लिविंग डोनर ब्लड ग्रुप मैच करुवा रिलेटिव जी हेल्दी होते फिट होते किसी पर्सन लिवर 70 ରୁ 75% पर्यंत नहीं आसबू तापर ट्रांसप्लांटेशन करूँ रिसिपिएंट डोनर भी भल रे रिसिपिएंट 2-3 मास भितर संपूर्ण ठीक हो 2004 रु जिते बेले मु ख्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज भेलोर तमिलनाडु रे लिवर ट्रांसप्लांटेशन सहित संश्लिष्ट थी छोट पिलांकर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा जाउथला ताको जीवन बंचाइया 24 घंटा ताको संगे रोथली से माने संपूर्ण भल है नुआ जीवन नहीं घर को जाऊले से माने एबे बड़ होई सोसाइटी मेन स्ट्रीम रे बहुत बड़ काम करुछंती सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करुछंती इनफैक्ट भारतर प्रथम लिवर ट्रांसप्लांट 20 मास जिते छोट शिशु होता तार नाम संजय माने 1998 मसीह सी गोटे डाक्तर है से ट्रांसप्लांटेशन करने आग को जाऊँगी जिते बड़े से स्वप्न देखिली सीएमसी भेलोर रे अरे आम ओडिशा रे तो लिवर प्रॉब्लम एते बेसी बहुत मूल्यवान जीवन को आम बंचे पारुनु ट्रांसप्लांटेशन ओडिशा रे हेई पारुनी संभव हो पारिबो कि कारण आम ओडिशावासी समस्त सामर्थ्य नाही जे आम समस्ते बाहर को जाई पारिबु ट्रांसप्लांटेशन करई पारिबु से स्वप्न देखिया पर जब ओडिशा फेरिली समस्ते कहले या बोध हुए संभव नुहे एते सहज जिनस नुहे किंतु बहुत प्रचेष्टा पर 2020 मसीह ऐतिहासिक प्रथम द्वितीय ट्रांसप्लांटेशन भुवनेश्वर रे ओडिशा रे सम हॉस्पिटल रे आमे करि पारिछु एबे गुडाए हॉस्पिटल रे ट्रांसप्लांटेशन आरंभ होबा को जाउछि इवन सरकार का प्रचेष्टा रे एससीबी मध्य अल्प दिन रे आरंभ करिवो मोर अभिज्ञता 10 वर्षर ओडिशा रे जो विषय आम आलोचना करूँ यही स्वास्थ्य सेवा को आम नहीं पारू कि गाँ गहली को जो मैंने समस्ते उपकृत हो पारे मोर अभिज्ञता 10 वर्ष लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत हाई एंड सर्जरी किंतु पॉसिबल हो पार ओडिशा रे केवल बेसरकारी डाक्तखाना रे नुहे सरकारी डाक्तखाना रे हो पार इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो पार गोटे उदाहरण देवी आज ओडिशा हेल्थ केयर सेक्टर पछरे नहीं बहुत उदाहरण सृष्टि कलानी गोटे छोट उदाहरण देवी थर्ड स्पेस टनेल सर्जरी जोटा कि छाती भितर पेट भितर आम सर्जरी करुचु बाहर कौन कटा ना विभिन्न रोग को चिकित्सा करुचु से सर्जरी केवल आम ओडिशा रे करुचु ईस्टर्न रीजन रे कहीं भी करू नाहंती बहुत रोगींकर कलुणी आग को लेकिन जाऊँ भुवनेश्वर ओडिशा उपरे खाली ओडिशावासी नुहंती नेबरिंग स्टेट आरंभ करके पंजाब काश्मीर लोक आसुच्चंती चिकित्सा होगापी बांग्लादेश लोक आसुच्चंती चिकित्सा होगापी बांग्लादेश उदाहरण कहीं दौची एवं कथबार्ता चली सरकार संगे डॉक्टर को आम भुवनेश्वर ओडिशा रे ट्रेनिंग दबू टेक्नोलोजी उपरे बांग्लादेश रे लिवर ट्रांसप्लांटेशन होउची जो हॉस्पिटल रे होउची
तांकोठु तो ओडिशा रे बेटर हॉस्पिटल अच्छी आमर इक्विपमेंट बेटर अच्छी आमर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर अच्छी तेणु ओडिशा रे मध्य विभिन्न जगह संभव हो पार हाई एंड सर्जरी विभिन्न ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी मध्य संभव हो पार ये जिनस को मध्य बहुत आग को नि जाई पार विभिन्न पेरिफेराल हॉस्पिटल आग को संभव हो पार जो ट्रांसप्लांटेशन विषय में कथा हो खाली लिवर ट्रांसप्लांटेशन नुह आमर रिक्वायरमेंट अलग ट्रांसप्लांटेशन आमको करने पड़ो जदि मोर मृत्यु होची मु जदि ऑर्गन को डोनेशन करी 8-10 जीवन नुआ जीवन से माने लाभ करेंगे से माने आगो को जीवे नुआ जीवन नहीं कि किंतु जेते बेले गोटे डिजीज को आम आइडेंटिफाई करिछु अर्ली स्टेज रे ट्रीटमेंट करछु ठीक हो जाउची जेते गोटे डिजीज को बहुत एडवांस स्टेज रे आम आइडेंटिफाई करिछु कोनोसी रास्ता नहीं कोनोसी चिकित्सा नहीं आम जदि ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन करि परिबो नुआ जीवन लाभ करिवे सी नुआ जीवन नुआ सकाळ रे सी आगो को जीवे ए सोसाइटी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे यह पॉसिबल हो पार किंतु गोटे छोट जिनस कहि लास्ट लाइन कहि बेसी समय नेबिनी किंतु आमको हेल्दी रही पड़ो गोटे मूल मंत्र जोटा समस्ते आम जाचु कौन रास्ता ना शेष समय अभाव शेष लाइन कहि आपण बहुत अल्प परिश्रम करने पड़ो डाएट लाइफस्टाइल आपण खाद्य जहाँ किसी भल लगू आपण को आपण खातु किंतु जदि से खाद्य आपण को हानि पहुँचाऊँगी ताको मॉडरेशन में खातु हेल्दी डाएट बैलेंस डाएट प्रति अल्प टिके ध्यान दिंतु आउ लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करूँ आपण बयस जहाँ होता जो समय आपण को मिलूँ जिते व्यस्त आपण था 10-15 मिनट 24 घंटे समय बाहर करूँ खाद्य लाइफस्टाइल युक्त आमर ओडिशा रे बहुत बड़ संपत्ति हो यंग पॉपुलेशन जदि यंग पॉपुलेशन से माने समस्ते हेल्दी नुहंती आपण को हेल्दी रही पड़ो से 10-15 मिनट मेडिटेशन करूँ शेष लाइन होची आमको हेल्थ केयर सेक्टर ओडिशा पछरे नाही बहुत आग को जीवाई पड़ो केवल ओडिशा नाही आमको भारतर विभिन्न लोकों कथा बुझापी पड़ो ये टेक्नोलोजी को बहुत आग को नापी पड़ो डिजीज को प्रिवेंट करी हबो हेल्थ लाइफस्टाइल प्रति ध्यान देले 1/3 कैंसर आपन को हबो नाही आपण सुस्थ रहिबे बहुत रोग हबनी रोग को प्रिवेंट करा जाई परिबो रोग को अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट करा जाई परिबो कैंसर को अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट करा जाई परिबो आमे ट्रीटमेंट करूची बिना सर्जरी कैंसर भल हो जाउची तेणु जदि भी एडवांस स्टेज हो लिवर ट्रांसप्लांटेशन भाया हाई एंड सर्जरी को भी पेरिफेरी लेवल को नि जाई परिबो ओडिशा रे पॉसिबल हो पारिबो आरंभ हो सारी एवं विभिन्न जगह हो पार तेणु आम जो स्वप्न नहीं चलीचु जे ओडिशा रे जो स्वास्थ्य सेवा अच्छी इन इक्वालिटी अच्छी ताकू केमती आम इक्वाल करूँ सब लेवल हेल्थ केयर को पहुँचू टेक्नोलोजी हेल्थ फॉर हेल्थ पॉसिबल हो पार थैंक यू वेरी मच सो फाइनल थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम को आगू नवा कि पूर्व जो स्पॉन्सर मान अच्छा मो टाइटल स्पॉन्सर करुच्ची शिक्षा अनुसंधान नॉलेज पार्टनर साथी स्पेशल पार्टनर आमरी हॉस्पिटल एसोसिएट स्पॉन्सर पारस हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल कलिंग हॉस्पिटल लिमिटेड एसोसिएट स्पॉन्सर विकास हॉस्पिटल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आम कार्यक्रम को आगू नवा डॉक्टर चंद्रशेखर खुंटिया अच्छा आपण टॉपिक हूँ हेल्थ केयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन ओडिशा। नमस्कार जय जगन्नाथ मु बहुत खुशी अनुभव करछि आसिकी मो धन्यवाद देवी आर्गन न्यूज को कि एमती गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट करछती कि हेल्थ कॉन्क्लेव एटा मोर लाइफ रे ओडिशा रे फर्स्ट टाइम गोटे मो हेल्थ कॉन्क्लेव अटेंड करछि एंड आई एम फीलिंग प्राउड टुडे कि एमती गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट होइछि कहीं ना मीडिया एका गोटे माध्यम जोटा कि आम जो भुवनेश्वर रे लोक ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ हेल्थ केयर केमिति आम प्रिवेंट करवा डिजीज को किंतु आम रिमोट रे जो रोचती लोक गुड़ाक आम गाँ गुड़ाक रोचती से केमती आम आमर मेसेजटा पहुँचे पारिबा मीडिया इज द राइट माने प्लेटफॉर्म दे कैन डू इट आ मु चाहूँगी कि एमती कॉन्क्लेव आहरी हो जमती आमर मिनिस्टर मैडम भी कहले कि एमती कॉन्क्लेव आहरी हेले से टिके अवेयरनेस बढ़िबो काहेकि ना हेल्थ केयर रे लोक निजको बहुत नेग्लेक्ट करती जेपर्यंत से मैंने पूरा एकदम लास्ट पेनफुल कंडीशन को न आसती से मैंने बहुत नेग्लेक्ट करती आउ सेटा कहीं होची बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस सेटा आमे सिटीज रे रहउचु कि टाउन्स रे रहउचु पाठ पढ़ीचु सेतरे हमर अवेयरनेस आसी जाउची किंतु जो लोक गुड़ाक जो हमर मैक्सिमम पॉपुलेशन ओडिसा रो जो विलेज रे रहउचती गाँ रे रहउचंती से माने पाठ भी पढ़ी नांती कि से मानको एते अवेयरनेस पहुंचुन तो एगुड़ाक इवेंट्स हेले डेफिनेटली इट विल बेनिफिट देम
ता सांग को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एमती काम करू कि सही लेवल रे से अवेयरनेस टाकू जाऊ कहीं ना देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल्स आम डिस्कस करवा जो कि आम लैक करूँ अवेयरनेस पहुँचुनी डिजीज बढ़ुची लास्ट पोजिशन को डिजीज आसुच्ची कैंसर है कि बहुत जिन एमती अच्छी आम डिस्कस करवा सेटा हवा कथा आउ सर जमती कहले कि माने देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल लिविंग आउटसाइड ओडिशा कि आउटसाइड इंडिया से माने चाहते ओडिशा पई किछि करिया पई ओडिशा हेल्थ केयर को इम्प्रूव करिया पई से मान को भी चांस दिया जाउची और से मास को सपोर्ट भी करा जाऊ कि सेमती किछि इंडस्ट्रीज की इनिशिएटिव स्टार्ट हो जो कि लोक बेनिफिट हेबे एंड प्रोडक्ट इज पीपल सो बेसिकली आम जमती फूड फॉर ऑल सेमती हेल्थ फॉर ऑल हवा कथा जमती फूड WHO जमती गोटे फूड सिक्योरिटी दउची फूड फॉर एवरीबॉडी सेमती हेल्थ शुड बी ए प्रायोरिटी एंड इट शुड बी ए माने प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम द रूट लेवल खाली जे सिटीज रे रोज कि टाउन रे रोज ताको पाको पहुँचले हेनी ना जे मैंने गाँव में रोचती से पाक आम केमती हेल्थ पहुँची पार सेटा आमर सब फर्स्ट माने प्रायोरिटी हवा कथा और सेटा गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स एंड ऑल पैरामेडिकल स्टाफ शुड गिव देयर ऑल माने फुल फ्लेजेड हाउ टू हेल्प आवर पीपल एंड गिव ए गुड हेल्थ केयर टू देम बेसिकली दैट शुड बी आवर निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद आम डॉक्टर शंकर रामचंद्रन को अनुरोध करुँची रूराल हेल्थ उपरे आपण प्रारंभिक अभिभाषण रखिए गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी Good afternoon, everybody. As per rural sector is concerned, all of you know prevention is better than cure. So we have to work more on the preventive aspect than the cure aspect. Though cure aspect is important, I am a medicine specialist and our aim is to cure the sufferer. The thing is that suppose a patient is coming to the hospital with loose motions, simple thing, loose motion, diarrhea. We will only give the drugs and ORS. After that, the patient will recover, but still again that patient will come to the hospital with the same problem. Where? The problem is that prevention. We have not make him or her understood clearly that it is a water, most of the communicable diseases are waterborne. About 70% communicable diseases are due to water, bad water hygiene. So we have to educate the people about how to take care of the water sanitation, take care of the food sanitation, different, there are so many different aspects. So the thing is that we must emphasize on the prevention aspect. Second thing, screening, very very important as per rural health is concerned. There are so many people, about 10 to 15 patients in our Vinsar, in medicine department about 10 to 15 patients daily, on daily basis coming with liver cirrhosis, stroke, snake bite, in different cases. So important thing is that the main cause of stroke that we have published a paper that hypertension and diabetes, these are two most important etiology behind the stroke. So we have to, if most of the people are unaware that they are blood pressure status or their sugar status, they are not measuring blood pressure at all, they are not measuring sugar. So at least we should go for the screening in the rural way. I have started a program that is called, I have started a 1 rupee click along with one program. It's your right to know your blood pressure and sugar. So if we give a simple glucometer and blood pressure measuring instrument, sphygmometer to a periphery setup, if it is not possible, we can give, because there is shortage of technical persons, so we can give digital glucometer and digital blood pressure measuring instruments. So they can at least measure their blood pressure, so that they can know that what is their blood pressure, what is their sugar. Ultimately, the patient will succumb to die due to cerebrovascular accident or due to coronary artery disease. So this is the problem. So simple thing, we have to encourage the people to screen themselves
for sugar and blood pressure. So I think a lot of work has been done by the central government as well as state government regarding the, even NGOs also playing important role in educating the people about the importance of measurement of blood pressure, sugar, everything. Third thing, many of the people are coming, I have seen many of the people are coming who are having snake bite or dog bite delayed. Of course, dog bite, we have no, if the patient was having rabies, we cannot survive, get them survive. But if the patient is bitten by snake or dog, rabid dog, so if there will be awareness, ASP is available in PSC CSC level. But we are hesitating, even with the physicians only referred it to the higher center. But we know that the time is an important factor. Even a delay in half an hour, minutes, can endanger the life of the patient. So at least we should take the risks. I do not compel anybody that you take the risk and admit the patient. At least we can give ASP, 1 vial or 5 vial or 10 vial, we can give the ASP so that the patient can be transported to the nearest healthcare center and the life of the patient can be saved. Similarly, organophosphorus poisoning is coming. Every patient, every doctor is referring to the higher center. Only they are doing gastric lavage. But the thing is that we do not know the indication, we do not know the contraindication of gastric lavage, even paraquat poisoning. I have worked hard for the paraquat banning, but still then it is not banned. It is very unfortunate. About almost all patients are dying due to paraquat poisoning. So my thing is that in the periphery level, what they are doing gastric lavage. But all of you know that paraquat is a corrosive poisoning. So it should be prohibited. But still then, I know that every physician know it, but practically it is impossible. Third, I was fourth. One of our colleagues was asking about the प्रश्न पचारे जो आप डिटेल्स कहे समय दृष्टि डॉक्टर ओमकार होता आपन को रिक्वेस्ट करुच्ची आप प्रारंभिक अभिभाषण रखु हेल्थ कंडीशन इन रिमोट ओडिशा समस्त को मोर प्रणाम स्पेशली थैंक्स टू अर्गस मत आमंत्रण कर स्टेज को देखु रूराल सेक्टर आमर मेन प्रोब्लेमटा हूँ आमर सचेतनतार अभाव स्वास्थ्य प्रति बहुत लोकंकर सचेतनता नहांती स्पेशली मु कहबी आमर ट्राइबल पीपुल ट्राइबल कम्युनिटी रे कौन हुए जितेबले भी आपनकर कौन सी रोग हुए कौन सी आइदर कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जहाँ भी हो तो ट्राइबल कम्युनिटी रे सेटा कौन भावती कि आमर कौन माने डुमा आसीगला भूत लागिगला ये सब सिचुएसन टी बेसी होता है जेहेतु से पूजा पाठ गुणी गारेडी ये सब गुड़ाक बेसी रे ध्यान दे था फल रोगटा बढ़ी बढ़ी चली थाए आते कम्प्लिकेसन हुए से ही डाक्तर पाखक आसती तापर भी आपण ग्रामांचल आप देखिए क्विक क्वाक बा विच डॉक्टर जहाँ को कह जाए से मैंने जिते प्रैक्टिस करती लोक मैंने बेसिकी पाखक आग जाती आते रोगटा बढ़ी बढ़ी बहुत कम्प्लिकेटेड हुए तापर जे डाक्तर पाखक आसती से अलरेडी बहुत लेट भी हो जाए आउ लोग मृत्यु मुखरे पड़ती तापर आ गोटे कथा कहबी इनफ्रास्ट्रक्चर आमर देखु अर्बन एरिया जमी इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी रूराल एरिया सेमती इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं आपण स्किल्ड वर्कर से मिल ना आपण देखु ताऊपर पुणी गोटे डाक्तर समस्या ग्रामांचल एमती सिस्टम हो डाक्तर मैंने ग्रामांचल को जावाक पसंद करूना तो ये सब विभिन्न गुड़ाक समस्या रही जोटा कि मत कौन ना कौन भाव में जोटा कि आमर हेल्थ सिस्टम को टोटाली डिस्टर्बेंस करुँची आमर जदि रूराल सेक्टर रे जदि आमर जदि स्किल्ड वर्कर माने रहिबे डॉक्टर माने जाइए रूराल सेक्टर रे जदि काम करिवे आउ आमर आशा अंगनवाड़ी को तांकर जदि स्ट्रेंथनिंग आमे जदि करिबा ताहले आमर जो अर्बन एरिया रे जो अछि आमर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो या फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस हो यार एतिकी परिमाण जो बर्डन अच्छी पेसेंट रो बर्डन अच्छी बहुत परिमाण एटा कमी जाई पारंता तो मो कहवा हिसाब रे गवर्नमेंट आमर केंद्र सरकार हूँ कि राज्य सरकार हूँ फास्ट फोकस्ड करने कथा आमर ग्रामांचलर जो आमर पीएससी सीएससी मान को माने वेल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सेटअप करने कथा आमर ए देखिए आमर 2014 रु आमर ओडिशा रे 7टा मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गलानी किंतु आमे देखिबा रूराल सेक्टर एमती केते हॉस्पिटल आमर वेल इक्विप्ड प्लस वेल माने एस्टाब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो पारिछि सेटा आमर बहुत कम होईछि
तो मु कहबी कि माने आमर मेन जिनस तापर पुणी आ गोटे जिनस एम्बुलेंस प्रोब्लेम आपड़ देखुवे नो डाउट एम्बुलेंस संख्या बढ़ी किंतु सेटा समुद्र संख्या मात्र कहले चले आउ एमती भी आप देखिए कोरापुट फुलबाणी मालकानगिरी गजपति कलाहांडी एमती अनेक जगह अच्छी जोटी हॉस्पिटल तो अच्छी किंतु पहुँचवाक रास्ता नहीं आपण गाड़ी पहुँचीज एम्बुलेंस पहुँचीज अधा बाट पर्यंत किंतु बुहाई की प्रसूति माने माने बुहाई की आसबे केतेबेले डॉक्टर कांधरे बुहाई की आछंती केतेबेले आपणकर माने आशा अंगनवाड़ी कांधरे भी बुहाई की आछंती ये सब प्रॉब्लम रहूची आपण जेतेबेले थिले सेतेबेले से चित्र थला एबे भी से चित्र अछि बदलनी हाँ चित्र तो बदलिबो धीरे धीरे बदलिबो हॉस्पिटल पर्यंत रास्ता हो जाइए सत किंतु हॉस्पिटल और सेपट को रास्ता ହେଇନି तो तो जेते जहाँ भी माने हॉस्पिटल सेपटे जब रास्ता हुआ सेपटे गाँ को पहुँची जाता तापर आ गोटे कथा कहबी आमर जो गर्भवती महिला माने जेहेतु माने जेतेबेले भी तांकर प्रॉब्लम होची माने होम डिलीवरी होबाकू माने पसंद करछंती जोटी आपण देखिए कि आशा माने प्रॉपर माने बहुत परिमाण रे आशा भी नहांती आशार आहुरी रिक्वायरमेंट दरकार अंगनवाड़ी आहुरी रिक्वायरमेंट दरकार जोटा कि ए पर्यंत है नहीं तो किसी ना किसी भाव में ये जिनस आमर माने स्वास्थ्य विभाग माने टिके ध्यान देवा कथा भित्तिभूमिटा फोकस होगा दरकार बस एतिकी मु कहबी पचारे आपण कहबे एबे मोर अनुरोध करी डॉक्टर संघमित्रा पति आपण टॉपिक होची अनमेट नीड इन ओडिशा एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ऑन अछि प्रथमे आपन को बहुत धन्यवाद आ समस्त को पुणी थे बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद देवी जे ये कनक्लेव नॉर्थ इंडिया अपन ऑर्गेनाइज करछंती हमको समस्त को भी इन्वॉल्व करछंती मु समस्त को सुनुथली प्रथम पैनल भी सुनुथली एई पैनल मध्ये सुनुची एते डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव एते मल्टी डिसिप्लिनरी जो आम कहि रिसोर्स फैकल्टी आपण आनीचंती मुझे आपन को समस्त मिसिकी गोटे कर काली दबा कथा कारण मु समस्त को सुनिली एनआरडीसी सुनिली आयुष शुणुली इवेन लिवर ट्रांसप्लांटेशन सुनिली जदि आपण सबको एनालिसिस करिवे वी कैन सी द इनिक्विटी फॉर एग्जांपल सर गोटे एग्जांपल देले जे हाउ से फॉरेन रे रही प्रोबायोटिक व्हिच इज अ बिग बिजनेस एट द सेम टाइम डॉक्टर होता इज सेइंग पीएससी रा आरोपटे रास्ता नहीं सो एंड well Dr. Manoj Sahu is saying कि liver transplantation पे हमें बांग्लादेश को ट्रेनिंग दौचु so you can see the two end of one spectrum and that spectrum is health गोटे पटे आमर availability of liver transplantation and training outside country at the same time another situation is that आम PSC connected नुह and that is the true story everywhere for health यदि maximum आपण inequity देखिबे सेटा health sector रे बहुत अधिका एवं काहे की अधिका कारण health गोटे एमती मु जानी आपण माने सुनिचंती कि नहीं गोटे वेरी फेमस कोट जने नोबेल लॉरिएट कहिथिले हेल्थ लिव्स फ्रॉम साइंस एंड ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द सोसाइटी अराउंड इट हेल्थ गोटे एमिती जिनस खाली मेडिकल हॉस्पिटल बा खाली मेडिकल केयर ताको डिटरमिन करेनी जेमती कि एक्सेस टू सेफ वाटर जोटा कहले डॉक्टर रामचंदानी और एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट जो कहले एम्बुलेंस नहीं access to good food जोटा डॉक्टर मानस कहले डाइट और your own disadvantaged childhood they all determine your ability to have good health एवं सेई जो डिटरमिनेंट बा सेई जो फैक्टर को हमें कलेक्टिवली कहू नॉट बायोलॉजिकल और मेडिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ से मानू हमें कहू सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ हुए तो आपणकर कन्स्टिट्यूशनल किसी प्रॉब्लम थिबो जोथि आपणकर कोनोसी देह खराब हेई पारे किंतु ताको एग्रावेट बा ताको प्रेसिपिटेट बा फुल ब्लोन करिया पई आम एनवायरनमेंट रो बहुत रोल अछि जेतेबेले आपण हेल्थ सर्विसेज कहिबे बा हेल्थ सिस्टम समस्ते किछि किछि हेल्थ सिस्टम विषय कहउथिले हेल्थ सिस्टम रो 6टी बहुत बड़ माने हेल्थ सिस्टम गोटे जो कहिबी होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट सेमती गोटे गोटे कंप्लीट एंटिटी एवं हेल्थ सिस्टम रो डिफरेंट पार्ट अछि गोटे तो पार्ट जोटा गोटे डॉक्टर होता कहले इंफ्रास्ट्रक्चर किंतु खाली बिल्डिंग बा खाली स्ट्रक्चर ठिया करदेले दैट डज नॉट मीन हेल्थ सर्विस पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट ता भितर रहिबा पे हमको दरकार एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दोज ह्यूमन रिसोर्सेज हु आर स्किल्ड नॉट अनस्किल्ड और नॉट हाफ स्किल्ड एंड थर्ड वेरी इंपोर्टेंट इज दैट ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स एवं जब आप अनमेट हेल्थ कथा मत पचारे मुझे कहि जदिव आम निरामय स्कीम रे ड्रग्स पहुँचे दी पारिचे किंतु निदान स्कीम रे हमको डायग्नोस्टिक को आहुरी इम्प्रूव करिया को पड़िबो दैट इज सम पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट देन फोर्थ इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि आमर हेल्थ सर्विस डिलीवरी गोटे हेल्थ सिस्टम
आमर हेल्थ सर्विस डेलीवरी अर्थ आम कौन बुझुचु फॉर एग्जांपल आपण मैंने बहुत जन अनुभव करते मु तो बहुत अनुभव करछि कौन सी देह खराब है आमको एटलिस्ट आजिका जुगरे 3टा स्पेशलिस्ट को कंसल्ट न कले पूरा हो नाही से बेले बेले मोर भी इच्छा हुए मु पुराणा मोर जो माने मोर समसामयिक से देखी आम जो गोटे गाँव में रोलु भद्रक पाखे गोटे गाँव में जहाँ भी देह खराब है आम जड़िए डाक्तर को देखाऊलु से आंठू पेन ठू आरंभ करी बांती पर्यंत सब ट्रिटमेंट करूँ जोटा आम जीपी बा डाक्तर पे डाकुलु से ही कनसेप्ट आउ नाही जोटा अशोक चौधरी वाज वेरी राइटली पॉइंटिंग आउट दैट फैमिली फिजिशियन कनसेप्ट सो सर्विस डेलीवरी केमती इंटीग्रेट हो पार रादर दैन आम पेशेंट को तू एठू टेस्ट करके आ सेठू मेडिसिन नहीं किया सेठी डाक्तर को पचारिक आ मत प्रेस्क्रिप्शन देखा एत बुलवा भितर से पेशेंट भी तो फ्रस्ट्रेटेड हो केयर कंटिन्यूम रहे ना टू मेंटेन द केयर कंटिन्यूम वी रियली हैव टू फोकस ऑन हाउ कैन वी स्ट्रीमलाइन द हेल्थ सर्विस डेलीवरी इंटीग्रेट इट एंड ऑफर इट एज ए पैकेज रादर दैन फ्रैगमेंटेड दैट इज समथिंग आई फील इज स्टिल टू बी वर्कड ऑन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो समस्ते आम कही सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ भी हो हाउ डू वी रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट हो बा प्राइवेट हो जितेबाला कौन सी एमरजेंसी हो बहुत लोग मुझे देखी जिते मुझे आचार्य कह गोटे मोर एक्सपीरियंस आचार्य हरिहर में जिते गोटे छोट रिसर्च करूली बहुत लोग घर बिकी बा घर बंधा दे आसी ट्रिटमेंट आते कहुई तुम्हें भल हो गल जीवु से जीवु कौन आम तो घर बंधा दे देचु जमी बिक्री कर सारचु एवं केमी जीवु भी से गोटे चिंता हो जाए मैं दैट इज द रियल स्टोरी सो हेल्थ फिनान्सिंग बा रिड्यूसिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जोटा कि आमर स्वास्थ्य बीमा 2टा जाक माननीय प्रधानमंत्री हो स्कीम बा विजु पट्टनायक स्कीम हो सेटा को से चेष्टा करमती पीपल शुड नॉट बी इम्पोवरिश्ड बिकॉज दे हैव स्पेंट ह्यूज कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर सीटा गोटे सबू हेल्थ सर्विस बा सबू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम रो मोस्ट इंपोर्टेंट एम रहिबा कथा लोक पोर आहुरी पोर न हो जाऊ बिकॉज दे हैड ए हेल्थ प्रॉब्लम यही जो 6टी को जब आम ठीक करें जेकोसी अनमेट हेल्थ प्रॉब्लम आम सॉल्व करें 2टी कनेक्टिविटी मु भावे बहुत इंपोर्टेंट वन इज डिजिटल कनेक्टिविटी कारण जितेबाला आम कोविड बेले लोक मानक पचारूँ कारण बहुत जनकर मैटरनाल डेलीवरी गुड़ाक जो होता आम गोटे छोट स्टडी करूँ कोविड इफेक्ट कौन रहा कोविड उपर नुह कोविड इफेक्ट कौन रहा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ उपर बहुत जन कहले आम्बुलांस आनी डेलीवरी पॉइंट को पहुँचबार असुविधा होती कहीं ना गोटे कथा गाँव में घर भितर फोन कनेक्टिविटी फोन कले सीना आम्बुलांस आसो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी बा डिजिटल कनेक्टिविटी इज वन सेकेंड इंपोर्टेंट कनेक्टिविटी इज रोड कनेक्टिविटी आम्बुलांस को जीवाई गोटे रोड दरकार से रोड जिते आप मैटरनाल मोर्टालिटी देखिए जो जगह गुड़िक हाईवे को बेसी कनेक्टेड से जगार मैटरनाल मोर्टालिटी सब बड़े कम कहीं से सांगे सांगे आम्बुलांस नहीं नियरेस्ट रेफरल फैसिलिटी को जापारे तेणु ये डाक्तर भूमिका नुह ये भूमिका रोचे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये भूमिका रोचे आईटी सेक्टर मोर कहवा उद्देश्य है पब्लिक हेल्थ इज सच ए मल्टी डायमेंशनल एंटिटी जमी आपंकर कनक्लेव एवरीबडी एवरी सेक्टर हैज ए रोल टू प्ले ये आप समय हम मुझे आचार्य हरिहरटा कहबी ना पर कहबी किसी असुविधा नहीं आम ए प्रश्न दे पार जदि अतिथि मानक किए प्रश्न पचारे चाहूे ठीक अच्छे हाँ हेलो आपण माने चेष्टा करुचती एते बड़ा बड़ा कॉन्क्लेव रे जे हाउ टू गो टू दी पुरेस्ट एंड दी रूरल मनोज बाबू जहाँ कहले आम एत बड़ माने लिवर ट्रांसप्लांट करूँ ये करूँ सब गोटे साइड रे देखिए सरकार चाहूँचे केते हाउ दे कैन मेड दिस अल्कोहल शॉप्स ऑफ शॉप्स वन साइड माने एवरी ऑलमोस्ट ऑल रूरल पीपल दे आर टेकिंग अल्कोहल चाहे से फैटी लिवर हो कि अल्कोहलिक लिवर हो जो थे कि अधिकांश देखिए से सिरोसिस लिवर हो पेट एत फुल आसवे आम पाक आसला बेलू एंड वी आर इन ए ट्रबल सेकेंड जिनस है बड़ जिनस हूँ गोटे MBBS पढ़ी कि पाठ पढ़ाई देर इज ए डिफरेंस बिटवीन दी प्राइवेट एंड दी गवर्नमेंट प्राइवेट रे गोटे MBBS पढ़ाई 1 crore 2 crores minimum for PG 3 crores minimum for MCH so one fellow who is trying or his parents they are trying the student need pass करुची
से माने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रे पढ़ी डू यू थिंक दे विल गो एंड सर्व द रूरल पीपल आउ विचारधारा एटीट्यूड ऑफ ए डॉक्टर कैन बी चेंज्ड मते लागू नाही एटा जोटा को आमे देखु सारे प्रश्न आपण काहा को पचार समस्त एना एनीवन मैडम भाई मैडम जोड़ा कहले आमे जेते पहुंची परिबा आमे आमे खाली जेतकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो ह्यूमन रिसोर्स हो आपण जो मेडिकल कॉलेज गोटे बनैबा पाई जो स्टैंडर्ड आईएमसी हो कि एनएमसी हो इज इट नेसेसरी जे एबे जदि एजुकेशन गोटे घर भितर करा ही पारुची ऑर्डिनरी एजुकेशन आम गोटे ऑडिटोरियम दरकार एते प्रोफेसर दरकार एते असिस्टेंट प्रोफेसर दरकार एते माने एविडेंस बेस हो कि पेशेंट जदि ताकू जदि देखिबा पाई खाली पेशेंट संख्या देखि जदि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया ही पारंता एंड डाक्टर तैयारी करि पारथांते मु भाबुची एते माने एडे बड़ बड़ कॉलेज नॉट नेसेसरी एट ऑल ताकू पांचटा लोक धरिकरी देखेंतु मोर कहवा कथा हला आपण माने वर्तमान एटा को माने चेष्टा करंतु जोदरी आमे रूरल रे किंदी पहुंचबा ठीक ठीक ये गोटे डाक्तर जीव 5 कोटी टका खर्च करी मते लागुनी आम भितर ये किए भी अच्छी 1 करोड़ तार व्हाइट इनकम थी बोली किंतु 1 रुपये तो ट्रीटमेंट करछोंदी कोटी टका नहीं कोन कोन ना हमर जो सिस्टम अच्छी एबे एमती मेडिकल कॉलेज रे आपण जदी पढिले ओडिसा रे यू हैव बॉट टू सर्व इन द रूरल एरियाज फॉर 5 इयर्स तो बेसिकली हमर जो प्रोफेशनल्स अछंती हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तांकर गोटे इंटेंट रहिबा दरकार अछि कि मु पाठ पढुची मु खाली पैसा रोजगार करिया पे पाठ पढुनी मोर प्राइमरी काम हैला मु हेल्थ केयर देबी एंड थ्रू दैट यू अर्न योर मनी whether you get your salary from the government or you do your private practice and get your money back तो सेटा गोटे इंटेंशन रहिबा कथा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स आपण गोटे डाक्तरी पढुचंती माने आपणकर एपैथी रहिबार अछि पेशेंट संगरे मु पेशेंट को ट्रीटमेंट करबी लोकंकर सेवा करबी सेही मनोवृत्ति जदि न होउची ताले आपण डाक्तरी पढिया किछि फायदा नाही किछि लाभ नाही से आपण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रे पढंतु कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस डिफरेंस होउची आपणकर मनोवृत्ति कोन आपणकर सेवा वृत्ति अछि कि नाही जदि आपणकर सेवा वृत्ति अछि देन डेफिनेटली जदि गोटे आपणकर फैसिलिटी दिया जिवो मालकानगिरी रे कि माने कौन सी अन्य इंटीरियर जगह रे अपन निश्चय गोटे डाक्तर जीवे किंतु सेही डाक्तर भी इंटेंशन रहिबा कथा कि मु जदि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रे सर्व करिया पई चाहूची आई शुड बी सिंसियर अपन दीटा एग्जांपल अछंती पाखरे इवन डॉक्टर होता जी अछंती से भी गोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सीएचसी रे काम करछंती तांकर इंटेंशन कोन दैट आई हैव टू सर्व द पीपल एंड आई हैव टू मेक देम पेन फ्री तांकर केमिति मु डिजीज क्योर करबी सेठी दैट इज माय मोस्ट माने प्रायोरिटी एंड दैट शुड बी सिंसियरली डन सेटा जदि नाही आपण जेडे बड़ डाक्तर हेले भी किछि फायदा नाही आउ के प्रश्न करे पय शॉर्ट रेडी प्रस्ताविबे हां माने संक्षिप्त रे तो हां हां संक्षिप्त मु प्रथमे अर्गस दृश्य श्राव्य गणमाध्यम को धन्यवाद दूची जे से माने समय और समाजर कसटी पथर रे परीक्षित व्यक्तित्व मान को आज डाकिछंती आमे भूली जीवा उचित नुहे जे ओडिशार 83.32 भाग व्यक्ति जो माने ग्रामांचल रे वास करती एपर्यंत मध्य आमे देखीचे रवि हॉस्टेल ठू आरंभ करी भोले मानक भली भेषज विशारद माने जो माने प्रज्ञादीप्त से माने ग्रामांचल जाइकरी सेवा करती जमती डॉक्टर होता कहले तेणु गोटे कथा हला जहाँ हूँ मानसिकता कथा डाक्तर खुंटिया जो कथा कहले ता हूँ बड़ कथा किंतु अपर पक्षरे आमको जेहेतु डाक्तर पति एठी अछंती कोरोना समय रे आमको प्रमाणित हो गला जे आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति कोठी केते आमे आमर बांफ एवं आमर जो काढ़ा एवं ग्रामांचल जो स्थिति आम देखिले से रोग प्रतिरोधक शक्ति केते डाक्तर माने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कहीं जाती नहीं एवं जो कथाटी सहज रही पारिबो टंकिकिया डाक्तर भली से कथाटी को रोगी को एभली परीक्षा करती सी भगवान न मानिक भगिया बोली माने
ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମାଜର ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନ ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏପଟେ ମଦ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ମଦ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିବ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଆଉ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବା ତମେ ଲିଭରଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କର, ଇଏ ଯେଉଁ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ଆଉ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଗ୍ନ ମାନସିକତା। ତେଣୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଷଜ ବିଶାରଦମାନଙ୍କର ମାନବର ସେବା ମାଧବର ସେବା ଦର୍ଶନରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲାଭଖୋର ବେପାରୀ ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୌଣସି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର को बेसी फोकस देवा अछि, हमें टर्शियरी के हेल्थ केयर को बेसी फोकस दउछु, जहा द्वारा कि लोड टा टर्शियरी हेल्थ केयर बेसी ही जाउछि, जेमति एम्स हला कि एसवी मेडिकल कॉलेज हला, से लोड टा काहे कि बेसी होउछि, काहे कि ना हमें प्राइमरी हेल्थ केयर टा को नेग्लेक्ट करछु। जदि हमर प्राइमरी हेल्थ केयर टा को हमें स्ट्रांग करिवा, सुदृढ़ करिवा, टर्शियरी हेल्थ केयर को आपे आपे तार लोड टा कमी जिवो, आउ से माने बेसी भलो क्वालिटी ट्रीटमेंट देई परिबे। प्राथमिक चिकित्सा सेवा पहुंचवा दरकार। बिल्कुल हमने कोन होछि, हमें बीएसके स्वास्थ्य केंद्र जेतिक रहबा कथा ओडिसा सेतिक अछि कि ना? बिल्कुल नहीं। 1288 बीएससी अछि, रहबा कथा केते 5000 अधिका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। आ गोटे प्रश्न नै परिबा। यस आई एम डॉक्टर आचार्य। शॉर्ट संक्षेप रे कहि। मोर प्रश्न नहे, मोर गोटे मतामत अछि। आजिरो ओडिशा हेल्थ कनेक्ट रे इनागुरल सेशन रे एंकर मैडम आनिथिले हेल्थ इंश्योरेंस रो प्रस्ताव आलोचना करिथिले। आजिरो हेल्थ ट्रीटमेंट पई जो बढ़ी बढ़ी चली खर्च ता संगरे हेल्थ इंश्योरेंस रो आवश्यकता मध्य निश्चय रही। हेल्थ सचेतनता विषय जब आम आलोचना करूँ, मोर समस्त डाक्तर बंधु मानक अनुरोध, हेल्थ सचेतनता सहित हेल्थ इंश्योरेंस रो आवश्यकता मध्य से पेसेंट रो बा समस्त जनसाधारण को आनिबा निहाती आवश्यक रही। निश्चित भाव आउ जणे आई एम कर्नल आचार्य रिटायर्ड, आई वाज फ्रॉम आर्मी मेडिकल कोर। जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स आम एते पर्यंत स्वास्थ्य सेवा विषय कहीछु, किंतु गोटे जिनस जोटा मो प्रोफेसर डॉक्टर सरस्वती स्वाई जे प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रोफेसर थिले कहूथिले, आज भी सेटा गोटे निराळ सत्य, सेटा होछि आमे प्रिवेंटिव मेजर्स पई आमे कोन करछु। बिकॉज जदि आमे कोनोसे डिजीज प्रोसेस को प्रिवेंट करि परिबु ताले एई स्वास्थ्य सेवा एते डिपेंडेंट आमे हबु नाही। सिंपल जिनस एते कहि छथि सर, ये जदि आमे वाटर बॉर्न डिजीजेस प्रिवेंट करि पारलु ताले इवन वायरल हेपाटाइटिस प्रिवेंट हबो, तार कॉम्प्लिकेशंस गुडा को प्रिवेंट हबो। सिंपल एनीमिया जदि आमे प्रिवेंट करि पारलु ताले गुडाए कॉम्प्लिकेशन एनीमिया रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, से प्रिवेंट हो पारिबो। किंतु प्रिवेंशन उपरे आमे बेसी कहूनु, आमे केवल देखुछु हाउ कैन क्यूरेटिव सर्विसेज रीच। आमे जदि प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज बा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टा ठीक भाव में लोकों पाखे पहुँचे पारिबु ताले आई एम श्योर एवरीबडी विल बी अ विनर। आउ जेमती हम आर्मी रे गोटे कोटेशन अच्छी, आउ सेटा आई वुड लाइक टू से बिफोर आई एंड अप दैट अ बैटल इज वन व्हेन आर्टिलरी इज गिवन इट्स करेक्ट प्लेस। मु या कहबी दैट हेल्थ फॉर ऑल इज अचीव्ड if public health is given its rightful place. Thank you very much. डॉक्टर रामचंद्रन आपण कमेंट करिया पे चाहिबे प्रिवेंटिव। डेफिनेटली मु सही कथा ही कहते जे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर मूलरू कह जाय गोटे फिजिशियन हिसाब रे कहबी, कारण मु गोटे सिंपल एग्जांपल देतली जो डायरिया कथा कहितली जे आमे डायरिया भीतर को जिबा बेले ते पानी जो असुर माने दूषित पानी सेवन करछंती बा ग्रामांचल जाउछंती, पानी रो हाइजेनिक स्थिति जानिबा निहाती आवश्यक। तो सेरा होची अवेयरनेस। तो डेफिनेटली प्रिवेंशन रो जो प्लेसटा कोरोना कोविड-19 ता ट्रीटमेंट कोन थिला, फ्रांकली स्पीकिंग जो सत कथा कहबी कोविड-19 रो कोसी डेफिनेटली ट्रीटमेंट नथिला, केवल थिला प्रिवेंशन जोटा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सैनिटाइजेशन आउ सोशल डिस्टेंस, एटा ही हमरो रक्षा कला कवच। आ परे हमर वैक्सीनेशन इज आल्सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जोटा डॉक्टर पति बहुत भल भाव कहि परिबे। तो डेफिनेटली प्रिवेंशन इम्पोर्टेंस रही एवं रही आ बाकी रहा सार जहाँ कहते माइंडसेट डेफिनेटली मुझे कहवाक चाहिए गोटे फिजिशियन हिसाब से गोटे फिजिशियन केवे भोकरे मर ना, तार अर्निंग सोर्सटा पाखे स्किल अच्छी
माने मरिया पर्यंत से रोजगार करिवो किंतु रोजगार करबा पई हमकु जो तीनटा जिनिस दरकार रहइबा पई घर माने पिन्हिबा वस्त्र एवं खाइबा ए तीन सहित जदि अधिक आशा करबा तो डेफिनेटली आमे मध्य ट्रबल रे पड़िबा। तो मु भाबुची जे आमे जेहेतु चिकित्सक समस्तंकर केवल चिकित्सक दायित्व नहीं समस्तंक दायित्व अच्छी खाली आम कहवा चिकित्सक मैंने निज फैमिली छाड़ी करी बदान्य हूँ ताहले हो पार नहीं समस्ते जदि बदान्य हे माने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आरंभ करी अंगनवाड़ी वर्कर आरंभ करी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ इवन सोसाइटी ताहले जे आम सिस्टम को सुधारी पारिबा नले सुधारी पारिबा नहीं। निश्चित भाव में आपन किछ कहया पई चाहू जोटा सर कहते डाक्तर मानकर मानसिकता मु जोठी भी ट्रेनिंग नहीं था प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जोठी भी ट्रेनिंग नहीं था दिस इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन मोर काम हो प्रोफेशन को मुझे चूज करी मो जीवन रे प्रोफेशन को आगो को लेकिन जीवी तेणु मानसिकता रहिबो ठीक मो रोगी सेवा केमती करी यहाँ केवल संभव हो पार जो रोगी आसुंच हॉस्पिटल को कौन डाक्तर पाखक मुझे रोगी बोली न भावी मोर परिवार जन सदस्य बोली भावी मोर बंधु बांधव भाई भौणी माँ बापा बोली भावी ताले मानसिकता ठीक रहिबो ठीक रे चिकित्सा दे पारिबी जोटा दरकार तांकर प्रति। द्वितीय जिनस जोटा सार कहते ट्रेनिंग केमती करा जीवो माने बहुत कॉस्ट केमती अल्प रे आमे जेहेतु ह्यूमन लाइफ डील करूछु ट्रेनिंग बहुत स्टैंडर्ड हवा दरकार ट्रेनिंग बहुत ब्यूटीफुल हवा दरकार जोटा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग से कंप्रोमाइज करवा उचित नुह से देखा पड़ो केमती कम खर्च करा तृतीय जिनस हूँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर जदि अलग बहुत गुड़े राष्ट्र करम भारत ओडिशा कहीं हो पारनी आम कहूँ ग्रामांचल लोक सफर करी आम जदि इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचे दे पारिबो एक्सपर्टाइज को पहुँचे दे पारिबो संभव हो पारनी कहीं शेष हूँ आपन जदि टिके खाद्य लाइफस्टाइल प्रति ध्यान देवे आज्ञा 90% रोग आमको हेनी गोटे कैंसर भी आमको हेनी तेणु जोटा समस्ते कहते प्रिभेन्सन तेणु जदि सचेतनता प्रथम ये प्रायोरिटी रोग को आम प्रिभेन्ट करि पारिबु कि हेल्दी लाइफ लीड करि पारिबु कि सेटा पॉसिबल रोग को अर्ली स्टेज रे चिन्हट करने भी पॉसिबल समय आसीगलानी आमको आगो को जावाई पड़ो समस्तंकर सहयोग दरकार केमती यूनिवर्सल हेल्थ केयर ओडिशा मध्य हो पारिबो यहाँ पॉसिबल निश्चित भाव में हो पार और समस्तंकर मानसिकता आग को बहुत ब्यूटीफुल हो पार निश्चित भाव में आम सारिबा कार्यक्रम को सारिबा किंतु गोटे कथा जहाँ अतिथि माने कहले जे भित्तिभूमि सहित मानव संबल आवश्यकता जदि आप देखिए राज्य ग्रामांचल में लोकों पाखे उत्तम स्वास्थ्य सेवा पहुँचापी डाक्तर अभाव रही आम सहित ओमकार होता थे डॉक्टर ओमकार होता जे चित्रकोंडार काम करछंती एबे भी से कहउछंती जे लोकंक भितरे अंधविश्वास अच्छी एबे भी अच्छी लोक भितरे एवं लोके हॉस्पिटल को आसिया पे माध्यम नहीं रास्ता नहीं से माने बुहा होइके आछंती आ डॉक्टर ओमकार होता निजे मध्य रोगी की बोहिकी कांधरे आनिछंती बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जो माने थिले डॉक्टर एसके दास अमेरिका फ्रॉम अमेरिका चेयरमैन कलिंग हॉस्पिटल आपनकर मूल्यवान मंतव्य पे बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित डॉक्टर संघमित्रा पति थिले आरएमआरसी डायरेक्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित डॉक्टर चंद्रशेखर खुंटिया थिले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओडिया समाज दुबई रे आपन प्रतिष्ठा करछंती एवं ओडिया मानक पे से काम करछंती डॉक्टर शंकर रामचंदानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद टंकिकिया क्लिनिक करछंती एबे टंकिकिया मेडिसिन मध्ये आपण दउछंती लोकन को डॉक्टर ओमकार होता आपको बहुत बहुत धन्यवाद आमे वर्तमान समय मोमेंटो प्रेजेंटेशन करिया पे मु डाकिबी हमर सीओ डॉक्टर प्रकाश साहू को ता पूर्व जो माने स्पॉन्सर अच्छे टाइटल स्पॉन्सर शिक्षा अनुसंधान नॉलेज पार्टनर साथी स्पेशल पार्टनर आमरी हॉस्पिटल एसोसिएट स्पॉन्सर पारस हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल कलिंग हॉस्पिटल लिमिटेड विकास हॉस्पिटल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रकाश सर डॉक्टर एसके दास एबे अनुरोध करी डॉक्टर संघमित्रा पत्री को दवा डॉक्टर संघमित्रा पत्री को
डॉक्टर चंद्रशेखर खुंटिया को मेमेंटो देवाई मैं अनुरोध करुच्ची डॉक्टर चंद्रशेखर खुंटिया को डॉक्टर शंकर रामचंदानी को मेमेंटो देवाई मैं अनुरोध करुच्ची डॉक्टर ओमकार होता डॉक्टर मनोज साहू Can he speak something? Yeah, please. But he has to sit and speak. Listen to you. Some solution. I cannot answer all the questions. We do not have skilled people. I have established skill development center, and based on the needs. So I just started. I funded that program. How we can meet the needs of our state people here in Odisha. I have started got the Skill Development Institute at JKU. JK University, whether you must be knowing, I am the chairman and chancellor. So that is a new venture I have started so that we can help our people. So what I can do for you? So in that sector, I will have incubation center. We all know in order to do something, in order to establish something, we have to have an incubation center. I will be funding 10 incubation center in 2024. I will be funding from my money. With my money, I will be for the interest of our state. But channeling the money, coming through the government channel, I need the help of Odisha government. They should have a clearance so that money can come. Money can come without problem, so that at least we can have at least 10 incubation centers in 2024. On the medical side, I like to see, I own and the chairman of Kolkata Hospital, which was #1 corporate hospital, corporate multi-specialty hospital, and now they are not #1, and they are maybe from bottom, maybe 3 or 4. But I think what I say, I can use that one. I can use that one
to do the study. Unless phase 1, phase 2, phase 3 study you don't do, you cannot really substantiate your product to sell the product. Here there are some doctors, there are some engineers, there are some researchers. Please lend your support. Lend your support. I will provide the hospital facility. You do the work so that at least we can help our state people. Then you know we are doing something for the state. Here somebody has been saying for Dubai. I like to say, come forward, state our help. Come forward, state our help. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your intention. थैंक यू, धन्यवाद. It is the real voice of Odisha, a commitment to excellence, a name that stands for people's first point of view and the truth. सचिवालय सीएम कठारु ओडिसा रो पुरपल्ली रे